Okay. In the fifth session of the today HPLC course. Okay. Today lecture delivered by the Mr. Gunvant Yadav sir. Okay. He is the experienced scientist in the bioanalytical department in Torrent Research Center for more than 7 years. Sir, continue. Also have some technical as well as scientific knowledge on the HPLC. Okay, as well as sir published more than 10 research paper. Sir also get the government fund to complete the project under the ICMR. Sir is also work as an executive application support in the Spinco Biotech since more than 4 years. Okay. Presently, sir is a field application specialist in the Spinco Biotech Private Limited. So, myself, Dr. Ashok Bari, and team of the SNLP Pharmacy welcome you to deliver lecture for the today session. So, hand over session to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So, very good morning to all of you. So today, as discussed with the sir, we mainly focus on the how the HPLCs look like. Means we can show you the hardware of the HPLC. Then we explain the hardware part. Means what is the role of each part. Then we can go for the troubleshooting part, and then I show you the some software overview, how the method was created and how to inject that. All the things I can explain you. And with me another two person is there. One is Mr. Vishal Patidar and Mr. Saroj Katara. So Vishal Patidar is our product manager, and Saroj Katara is our field application specialist, who shows you the live demo of HPLC in our lab. Okay, so welcome all of you again. And now I just give me 2 minutes. I share my screen. So first I go through the presentation, then we go for the software demo, and then we go for the hardware demo. Vishal, please enable the screen sharing. Now you can share, I think. Kindly check at your end. Okay, so very good morning again. So today's presentation mainly on HPLC instrumentation, maintenance and troubleshooting, right? तो अभी तक आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे मोस्टली देयर इज द मैनुअल इंजेक्टर, बट नाउ मैनुअल इंजेक्टर इज द आउटडेटेड. नाउ व्हाटएवर द इंडस्ट्री यू आर रिफरिंग, everywhere you can found the auto injector HPLC. So that HPLC maybe look like this way, right? It can be a modular system or it can be an integrated system. Okay. सो आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे, बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड ऑल दिस थिंग, बट जस्ट आई गिव यू द 1-2 स्लाइड कि व्हाई वी आर यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी. So our main purpose to use the chromatography is the separate and to quantify, or it may be a qualitative analysis, right, in your sample. Okay, so chromatography divided generally in the three parts, that is the liquid chromatography, gas chromatography, and SFC, that is we call as a supercritical fluid chromatography, that is the combination of liquid and gas chromatography. Okay, so why we are use the chromatography? So our main purpose is used to chromatography is the analyze, identify, purify and quantify. So before that we need to separate our components. Okay,
So what that meaning actually? Analyze means to examining the mixture in its component and their relation to each other. Means we are just doing the qualitative analysis. Then identify means we are confirming whether it is present or not. Then purify means we have to separate out and we are collecting. Generally, when you are go for the impurity synthesis lab, right? So who are synthesize the impurity. So they are mainly use the purification. So then done by the preparative HPLC. So purification in the sense you have to separate your interest of compound from the other compound and you collect it and evaporate the solvent and you can get the final residue of that particular impurity or the compound. So that is we called as a purification. Then next coming is the quantify. Quantify means you are going to measure the your interest of compound in your sample. That is we called as a quantification. Right. So this is the you already understand the how what are the basic principle for the separation mechanism, method development, all this thing. Now we mainly focus here in the HPLC. So before going to the HPLC hardware actual, we just understand the flow diagram. Okay, what are the component are present in your system. So first is your mobile phase reservoir, then it goes to your pump, then is pumped to the it goes to the your HPLC column, which is the heart of your HPLC, where actual separation occurs in your HPLC. Then it goes to the detector, and detector 2 it goes to our data monitor. It may be it is your computer, right? And whatever the liquid is come out from the detector, that goes to the waste. If you are using the preparative HPLC, means whatever the illuent come out from the detector, that you can collect it, okay, on particular retention time. So this is the general flow diagram of your HPLC. Now, what information can give us? So it gives us the chromatogram. What is that chromatogram? And what thing we need to confirm in the chromatogram? First is your retention time, means how much time of your compound spent in your LC. That is we called as a retention time. Then area. Area is the peak start to peak end. So that is we called as a AUC, that is the area under curve. So that is represent as a area. Then height is indicate for your intensity. So intensity of the peak represent as a height. So based on this height and area, you are going to uh, quantitate or measure your compound, right? Okay, so what are the terms or terminology used in your when you are work with the chromatography? The first is the chromatogram. What I already show you, that is the plot of detector signal output versus time or illusion volume. Then mobile phase is nothing but it is your liquid, that is we called as a mobile phase, which is continue moving through your column. Then next is a stationary phase, that is your stagnant phase, that is we called as a column. So different chemistry of the column is available. So based on nature of your compound, you have to select your column. Then next is the peak. Peak is nothing but it is the visual representation of your chromatogram based on your detector signal. Whatever the signal we received from the detector, that is represent in terms of the peak. Okay, retention time. It is the nothing but it is the time required to reach your component from autosampler to the detector. Means once it can get injected, then how much time it spent into your column and it reach to the detector, that is we called as a retention time. Then qualitation and quantitation. So this is the two terminologies very important. Whenever any person can discuss, any industry person or any technical person discuss with you, they discuss in these two terminology. They ask you whether you are doing qualitative analysis or you are doing the quantitative analysis. Okay, so what is that? Qualitative means to identify and quantitative means to determine or to measure. So there is a difference between qualitative and quantitative analysis. So when you simple example I give you, when you're doing the any essay, that is called as a quantitative analysis, means you are going to confirming
what is your label claim and what you are actually getting. So you are going to measure, okay, suppose ki paracetamol 500 mg is the label claim, and whatever you are achieving, it is the 480 mg or 490 milligram or 520 milligram. So that is called your quantitative analysis. And what is qualitative? That is your nothing but your impurity profiling. So we are just confirming and confirming, okay, if any impurity is present, then what is the percentage of that impurity with respect to my main compound. So that is the analysis we call as a qualitative analysis. Okay, so now we start with the instrumentation of HPLC. As I told you that now manual injection technology is outdated technology. No one can use that technology in their routine use. Of course, except academia where they are using or some small scale industry where injection or sample load is very low. So they are using, but it is if you are asking any new system, definitely it come with the fully automated system, not a manual injector system, right? So this is the two system photo which represent here, that is the HPLC. Okay, so this first photo we called as a integrated system, where your pump, detector, auto sampler, column oven, everything is integrated in single module. So that is we call as an integrated system. And this is your modular system, right? So modular system where your auto sampler, pump are coming in a different section, different part, means all part are individual. Okay, so that is the two type of the system, one is the integrated, one is the modular. Okay, so but functionally both are equivalent. Okay, so there is a no difference between the as a functionality. Okay, so what they contain, one is the pump configuration, solvent delivery pump, sample injector, column oven, and finally is your detector. Okay, so this is the modular system configuration. So this is the HPLC system, where first is the your pump, then detector, auto sampler, column oven, right? So this is the all the part of the your HPLC. So solvent delivery system, which can continue run your mobile phase by you through the pump. Then it goes to the auto sampler, where your sample get inject, and it carry your sample and it goes to your column oven, where your column is kept, and column oven to it goes to your detector. Okay, so this is the way your sample analysis is the done. So next system is your modular system, sorry, integrated system. So integrated system, everything is in a single unit. So if you see, this is the first portion is your auto sampler, where you can kept out your tray outside, and you can arrange your sample, and you have to define the vial position and tray position. So it automatically take the injection. Okay, so here is the larger vial capacity, then no manual injection is required, or it can minimize the person to person injection variation, because everything is done by the auto sampler. So there is accuracy is more, and you can program, you can means create a batch, and you can inject the maximum number of the sample. And you have to not require the presence each and every time when your new injection is the start. Okay, so this is the advancement in the auto sampler. Next portion is your pump. Okay, so of course pump is for your degassing purpose, sorry, to deliver the your solvent, your mobile phase to the throughout the system. Okay, so pump is very much important, because it can run your mobile phase throughout the system, start from the auto sampler to column oven to detector. Okay, so this is the also new design pump, where you can use the multiple number of composition. You can get the stable pressure, even you are changing your mixing or proportionality of your mobile phase. It cannot that much impact in your baseline,
because pulsation is very smooth, so it gives you the stable baseline. Okay, so this is the new advancement comes in your pump technology, right? Next portion is the column oven. Of course, column oven is very important when you are doing some critical analysis, when you are going to elute the closely elute peak. Okay, अगर आपके दो peak है, if they are not getting proper separation and they are very much sensitive with respect to the oven temperature, means general rules क्या है कि when your temperature is increased, your viscosity of mobile phase is decreased. When your temperature is low, your viscosity of mobile phase is more. Okay, तो जब भी आप एसीएन मिथेनॉल या वाटर मिथेनॉल मिक्स होता है आपका, then it creates some viscosity. Okay, so it is the viscous solution. So that viscosity or that combination of that mobile phase can impact in your separation of the peak. Okay, तो अगर आपको combination वही रखना है but you want to improve your separation, so then you need to apply some temperature. So that temperature can provide by the column oven. Okay, so earlier whatever the column oven available, that are the Peltier type column oven. Now what is the advancement in term? It is your called forced day circulation oven. Means आपने कभी ओवन देखा होगा, राइट? what आप जो भी ओवन यूज करते हो ग्लासवेयर वगैरह, या तो आप आपकी टीएलसी प्लेट ड्राई करने के लिए या कुछ भी आप ओवन यूज करते हो, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है कि देयर इज अ इनसाइड द वन फैन व्हिच कंटिन्यू running and it spread the temperature evenly in each and every part of the compartment. So same technology used in our column oven, where there is a fan and which can continue blow, so it circulate the even temperature throughout the compartment. Okay, so which gives you the accuracy in the temperature. तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका थ्रू आउट द एनालिसिस योर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सो इट कैन नॉट इम्पैक्ट इन योर एनालिसिस, राइट? और दूसरा कि दिस कॉलम ओवन हैज अ कैपेसिटी टू एकोमोडेट द 6 कॉलम ऑफ 150 mm एंड 3 कॉलम ऑफ 250 mm. तो आपको क्या बेनिफिट होगा? अभी आप देख रहे होगे कि इन मार्केट पहले क्यूबीडी कंसेप्ट, that is a very well known word for you, all of you, right? QBD का concept आप लोगों ने बहुत सुना होगा. Generally that QBD concept applied into the formulation, but अभी आप कोई भी USP या कोई भी अदर रेगुलेटरी को देखते हो, अगर उनका कुछ भी मोनोग्राफ अपडेशन या उनका जो USP के वेबसाइट पे भी अपडेशन आ रहा है, so they are also now focusing on the AQBD, that is we called as a analytical quality by design. Okay, so definitely if we thinking about some advanced level, so we also need some advanced level of the instrument. Okay, so that instrument is fulfill that advancement, because here is the capacity to accommodate 6 150 mm column, and you have a by a quaternary mobile phase, means you can keep as a 4 mobile phase in your system. Okay, so you can apply the factorial design. So at a time 6 into 4 means 24 factorial possible way you can do your analysis. And there is a one software that is we call as a method scouting, where you can get the results in particular trial what you are getting the result. So it gives you the interpretation of the data. So what benefit we get if we using such kind of technology? What benefit we are getting? That benefit is that it's saving your method development time, right? It saving it minimize your human intervention, means it burden. I'm not to say the intervention, I can use the word that is the, it can minimize your workload, it can minimize your mental burden, because you have to not keep a reminder that I have to change the column, I have to change the flow rate to take the different trial. Here machine itself or HPLC itself can do all these things. It change the flow rate, it change the temperature, it change the composition, right? So this is the way the advancement come. So in such advancement, that column oven play a very important role. There is a one switching valve which can switch your column also, means you are using the 6 different chemistry column, means
In a single sample preparation, you are taking a trial on the 6 different column, one by one. Okay, so it gives you the perfect results. It can minimize your method development time. Okay, so this is the way this advancement technology is work. Next is come is your detector. Okay, so of course for the HPLC, detector is very important, because the detector we can select based on the what type of analysis or what type of chemistry of our compound, right? Okay, because every detector has a own principle to detect the compound. Suppose simple example, if I can give UVPDA detector. So here basic requirement is your compound must be a chromophoric in nature. If your compound is chromophoric, then and then it can be detected by the detector, right? If your compound is non-chromophoric, definitely it can not be detected by the UVPDA. So for that you have to go for the derivatization. Okay, to make your compound or to attach the chromophore in your compound, and then and then you can able to get the detected. Same way if you are using a detector, definitely your compound must contain the fluorescence group. Then and then you can detect. So this is the way each and every detector has a own principle to work. Right, so selection of the detector is also very important when you are doing the analysis. Okay, now we can go. I show you the all the things. Okay, what are the component? How actually is look like practically. Now we can see the theoretically. Okay, what is the role of pump configuration? Okay, so pump configuration is very important. So when I told you, when you are think about the manual injector, there is only single pump. So that is we called as a isocratic system. Now whatever the system I show you, that is your low pressure gradient system, where single pump is there, but it has a 4 mobile phase line. That is we call as a low pressure gradient system. Next is the high pressure gradient system. So what is the difference on between that pump configuration, and what is the significant use of that configuration? Okay, as isocratic, I told you that it is the generally available in the manual injection configuration, where your one pump manual injector, then it goes to the column, it goes to the detector, and then finally goes to the data processor. So that is we call as the isocratic system. So here is the choice is the one mobile phase only. Okay, so whether you can use in a pre-mix mobile phase, or you can keep it as a single solvent as a mobile phase. Okay. Next is the low pressure gradient system. Okay, now this is the very important because whenever if you are a student and whenever you are going to the industry, definitely they have a asking you the first basic question in your interview. So this is the one of the question in your interview. So what is the difference between the low pressure gradient system and high pressure gradient system? Or they can ask the question, what is the low pressure gradient system? The simple difference is that there is the mixing difference and pump configuration, right? In low pressure gradient system, your pump is the single, and there is a mixture is that is the before the pump. ओके तो आपने जो भी कंपोजिशन डिफाइन किया है मेथड में, सपोज A25, B25, C25, D25, तो वो चारों में से 20-25% जाएगा और यहाँ पे मिक्स होगा. Then it goes to the pump and goes to the auto sampler, column, and detector. Okay, so that is the we call as a low pressure gradient system. Then next come is the high pressure gradient system. So आपने देखा लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम में आपका मिक्सिंग कहाँ पे हो रहा है? बिफोर दी पंप. यहाँ पे सिंगल पंप है और आपके 4 मोबाइल फेज यूज हो रहे हैं. When it goes for the high pressure gradient system, means each mobile phase required the one pump. Suppose if you want your quaternary system, means 4 mobile phase, you require the 4 pump. If you say my binary system, then there is the 2 pump. And here is mixing done after the pump. Okay, so that is the difference between the high pressure gradient system and low pressure gradient system. Now question is come, when I have to use high pressure and when I have to use the low pressure gradient system. Okay, so simple is that when you are working on the generally into the pharma, when your run time is long,
like 80 minute, 30 minute, 40 minute, 50 minute. In such condition, the gradient changeover is not that much short duration. So that time your low pressure gradient system work perfectly. Okay, so if you see in the any pharma company or any other company, they are preferring, when they are preferring the HPLC, they go for the low pressure gradient system. And now, where is the application of the high pressure gradient system? If you see in generally when mass used as a detector, LCMS, right? So when mass is the detector of your LC, in such a condition, your run time is very shorter, because there is run time is 5 minutes, 6 minutes, 4 minutes CRO. So they are preferring the high pressure gradient system, because here gradient changeover is a very short time period. Okay, so due to that, it required the high mixing accuracy. So that high mixing accuracy given provided by the high pressure gradient system. So generally, if you practically compare, there is a not that much difference into the mixing. But when you are working on the short gradient, of course, that time high pressure gradient system give the more efficient mixing compared to the low pressure gradient system. Okay, so this is the difference between the high pressure gradient system and low pressure gradient system. Okay, so why we need to the gradient system? Okay, so this is the simple one example I just show you. The as we know, okay, when we are working on the mixture of the compound, we don't know the nature of each and every compound. Okay, जो कंपाउंड हमने इंजेक्ट किए है मिक्सर का, ठीक है, वी डोंट नो कि हाउ इट कैन बिहेव विथ माय मोबाइल फेस कंपोजिशन. So this is the one example. Suppose यहाँ पे मिथेनॉल वाटर 60-40, आप फिक्स ग्रेडियंट पे काम करते हो, your peak, all peak are get separated, but what you have a drawback. One is your run time is long. Second, whatever the peak elute is led, that peak shape is very poor, their signal to noise ratio is very less, right? So you are not getting or able to achieve the sensitivity for these two peak. Okay, so now what I can do, I just change the ratio. What I do, I change the ratio from 60-40 to 80-20. So what I found that whatever the peak elute early, that get merged with each other. But what I get the benefit is that whatever the peak elute last, they are elute early, so it has a very good SN ratio, signal to noise. Okay, so I can achieve my sensitivity, but here drawback is that I have to compromise with this 4 peak. So to avoid such two condition, what we are doing the gradient program. So what gradient program, how it work? In initial phase, you can keep your ratio is 60-40, so which can justify the this 4 peak, and then after some time you can change your ratio to the 80-20. So it can be, it is the suitable for this 2 peak. So ultimately you can see that all your 6 peak can get separated. So that is the benefit of the gradient. And of course you can shorten your runtime, and you have to not compromise with the sensitivity of all the peak. So that is the benefit of the gradient time program. Okay, so what are the type of the gradient generally used? That is the linear gradient, step gradient, and isocratic illusion. So linear gradient means it gradually increase your concentration. In step gradient, in a fixed interval, in a specific concentration can run, and as a time being, it change from the other concentration. So this is two type of the gradient generally used in your method development based on this your need of your analysis, separation of your peak, right? And isocratic illusion means it is the fixed gradient, means आपने 60-40 चला रहे हो तो आपका throughout run time वो 60-40 ही चलेगा. So that is the difference in the gradient, and that is the importance of the gradient. Okay. Now, what are the detector used in HPLC? That is UV visible, PDA, RF detector, conductivity detector, RID, ECD, ELSD, and mass spectrometer as a detector. Okay, so these are the detector used in the HPLC.
ठीक है, अगर कोई बोलता है LC-MS और LC-MS सिस्टम मींस मास इज द डिटेक्टर ऑफ योर HPLC, okay, like a UV-PDA, okay, but it is the costly detector and it is the very highly sensitive detector compared to the all of this detector. Okay. Okay, so how you can select your detector? That already I explained you. Each and every detector has a own principle for the detection of your compound. Suppose your compound is containing chromophoric group, it can be detected by the UV visible and PDA detector. If your compound containing the fluorescence group, functional group, then it detected by RL. If your compound having a charged compound like inorganic ions or organic acid, it is detected by the conductivity detector. Then if your compound having a functional group which can be oxidized, so that can be detected by the electrochemical detector. And if your compound doesn't contain any this property, okay, if your compound doesn't contain any this of the property, means we need some universal detector which can detect each and every compound. So your RID and ALSD is the universal detector. If your compound doesn't contain chromophoric group, doesn't contain any fluorescence compound, it doesn't contain any charge compound or any oxidizing agent, then you have to go for the RID detector. Okay, so RID is your universal detector. Okay, anyone can ask you the question, which one is the universal detector for the HPLC? The simple answer is that your RID is your universal detector. Why it is called universal detector? Because RID work on refractive index. So it can measure the refraction of the light. So if you see, each and everything has a own refraction. आप कोई भी चीज ले लो, आप खुद को भी देख लो, आप खुद को भी देखोगे, you have a own refraction. आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल, आप पानी का ग्लास भरो, उसमें आपका उंगली डालो, ओके, आपने स्ट्रेट डाला होगा बट इट शोज सम एंगल. व्हाई इट शोज द एंगल? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. ओके, सो दैट रिफ्रैक्शन इज मेजर्ड बाय द RI डिटेक्टर. ओके, सो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको रिफ्रैक्शन नहीं होता है. Each and everything has a own refraction. So that refraction is measured by the RID. So RID work on the basic principle by the measuring of the refraction of the light. Okay, so this is the reason RID called as a universal detector, but it has some limitation. You cannot use the gradient program. It has some sensitivity limitation. Okay, so for that you have other choice of detector is the mass spectrometer, because as a RID we called as a universal detector, we called mass as a universal ion detector. Means the compound which has a capability to convert it into the ions that can be detected by the mass. Okay, so almost most of the compound have a property to convert into the ions. Okay, so whether it can be detected by the GC mass spectrometer, or LCMS, or liquid chromatography mass spectrometer. Okay, so that is the reason mass spectrometer called as a universal ion detector. Okay, so this is all about the detector. Now, how you can select your detector, that already we discussed. You have to first check the property nature of your compound, whether it contain a functional group, or if contain the functional group, what type of that functional group. Okay, it having compatibility with your detector or not. Then you have to select your based on whatever the solvent you are selecting in your mobile phase, that has a low drift and noise level. Then of course we have to think about the sensitivity, response, and linear dynamic range, and low dead volume. Okay, so dead volume generally impact defined based on your length of the column. Okay, and ID of the column. Okay, then cell design and insensitivity of the changes in the type of the solvent. Means when you are doing the validation, there is a one parameter we called as a ruggedness. In that ruggedness they have to check the whatever the set flow rate, they doing some plus or minus changes.
and they are evaluating the impact. Okay, so your detector should be remain stable on a such a changeover. Okay, so that is the all about the thing you have to keep in the mind when you are going to select the detector. Okay, now we can move. That is the all about the instrumentation. आपने instrumentation पढ़ लिया, ठीक है? I have to show you the pump, auto sampler, column oven, detector. Okay, so that is the part of your instrument. But of course, this is the machine. So definitely it has some require maintenance. It has some troubleshooting. So how we can identify, how we can do ourselves troubleshooting, that I can show you the some example. So definitely each and every problem having the solution. Okay, whether it can be a written in somewhere, whether it can be a get it from someone, right? Or whether you can understand or you can find out by yourself. Okay, so it is very very important because agar hum simple, I give you the simple example. When you buy a new mobile, how much you can take care of your mobile, of course, right? Its value is 10,000, 15,000 or 20,000, or if you someone buy some high-end mobile like a iPhone or Samsung, then it might be up to 1 lakh. Okay, so when you buying a such thing, you have to also take care, right? The same way, this instrument is cost also in lakhs, not in thousand. Okay, 15 lakhs, 20 lakhs. So when you are going to invest that much amount, definitely you need take care of your instrument like your mobile. Okay, because it is also electronics, one kind of the electronics. Okay, so definitely we have our knowledge of the basic troubleshooting. So we each and every time we not required to depend on the service engineer. Okay, so what are the things you have to do before the start of your analysis? Okay, to keep your system very smooth, run your system very smoothly. The first is the filter your mobile phase. Yes, it's very very important. Because if you are not filtering any particle which is present in your mobile phase, that block your system, because the tubing ID is in a 0.2 mm, 0.3 mm ID, right? So if you just imagine 1 mm, uh, uh, you know what is the 1 mm size, right? So that is the 0.2 or 0.3 mm. So how it is size. So if any minor particle which is present in your mobile phase, that can block your tubing and it can generate the high pressure. Okay, second, आप मोबाइल फेस बनाते हो, फिल्टर किया, सोनिकेट किया, but you have to keep some time your mobile phase to the room temperature, because when you do the sonication, it generates some heat. Okay, it generates some bubbles. Of course we are doing the sonication to remove the dissolved gases. Okay, but when you kept your bottle from sonicator, you can see that there is a continued bubbling because of the heat. Okay, so to stabilize that bubble, your temperature of your mobile phase, you have to keep your mobile phase for the at least to few minutes for the room temperature, minimum 15 to 20 minutes. Once you sonicate your mobile phase, you have to keep your mobile phase 15 to 20 minutes in the room temperature. Then you have to purge the all the flow lines in your mobile phase to remove the bubbles. Then a अगर आपका पूरा ट्यूबिंग ड्राई हो गया है, you have to fill up that tubing with your mobile phase. If you keep it as a dry, definitely you are getting the fluctuation in your pressure. If you getting the fluctuation in the pressure, ultimately you are not getting the stable baseline. Okay, so this is the reason. These are the very very basic and important things. Whenever you start your analysis, you have to keep this all this thing in your mind. Okay, another is if you are using the buffer, definitely you have to change your solvent of the plunger seal washer. Okay, that is generally kept as a 10% IPA in water. Okay, so you have to frequently change that solution to keep your plunger seal very much
working condition. Otherwise, when you are using the buffer, if you see in the generally in the pharma or any other industry, they are using the phosphate buffer, so which concentration is very high. If you are not wash your system properly, means your buffer remain inside the your system, and if your system remain ideal for the 2 days 3 days, it continuously evaporate the solvent. So due to the evaporation of the solvent, your buffer can convert it into the crystal form, okay, or in a powder form, so that can stuck in the system, okay, so it can give you the trouble. So to avoid a such thing, once your use is completed, you have to wash out your system thoroughly, and you have to change your plunger seal washer solution, okay. Then दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, as I told you that your column is the heart of your HPLC. So once your analysis is completed, you have to wash your column with the solvent which doesn't contain any kind of the buffer. So simple ideal solvent is water methanol 50-50 or your water ACN 50-50. Okay, अगर आप column को longer time use नहीं कर रहे हो, definitely you have to store your column in your storage solution. Storage solution is 10% water in methanol or 10% ACN in water in SEN, right? So this is maybe your storage solvent, okay. Now what are the other parameter can impact in your analysis? So one is the your solvent grade, ठीक है। आप कभी भी एनालिसिस करते हो ना, तो कोई भी आके बोलेगा कि भी which solvent you are using for the HPLC analysis, आप कुछ भी उसको प्रॉब्लम बोलोगे कि भाई मुझे बेसलाइन स्टेबल नहीं आ रही है, अनवांटेड पीक आ रहा है जो मेरे सैंपल में नहीं होने चाहिए, राइट, दैट इज वी कॉल्ड एज अ घोस्ट पीक, ओके। तो that might be come due to the your solvent grade, okay। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास HPLC ग्रेड का solvent नहीं है, हमने LR ग्रेड का solvent जो पड़ा था, we are using that solvent. So what happened, that solvent, of course they are also written the purity is 99.9%, but it is the LR grade solvent, so they have a very high absorbance. So at a lower wavelength, it can gives you the noise in your baseline, okay. So whenever you can use, always use your HPLC grade of solvent, HPLC grade of water, okay. Then mobile phase use of buffer. So buffer का क्या role होता है, okay। Now once completed solvent, now next is your buffer, okay। अगर आपका buffer concentration ज्यादा है और आपने properly wash out नहीं किया है after analysis, so where it can impact on the pump, where it can damage your plunger and seal, okay। So plunger and seal is very important part of your pump to smoothly pumping out your solvent, okay। So if it is not it get damaged, means definitely you get some trouble in your analysis. Then next is the effect on column. It creates creation of the column voids, means if your concentration is very high and if it remain inside the column, means ultimately it disturb the your silica particle arrangement inside your column. Then effect on the flow line, means it does the corrosion, ठीक है। हमने कई जगह पे देखा है कि सिस्टम लॉन्ग टाइम से यूज हो रहा है, when we open the system there is a deposition of the salt in most of the part of the system, most of the tubing cover with the deposition, same like in our house। अगर आप घर पे भी देखते हो, आपके बाथरूम वगैरह में नल, ठीक है, आपका जो भी टेप वाटर आता है, तो वहां पे क्या होता है कि इट इज कंटेन वेरी हेवी सॉल्ट, because it comes directly bore to your home, right। तो उससे क्या होता है, आपके नल के आसपास you can see the white, वहां पे white हो जाता है। what is that, that is nothing but it is salt which is present in your water। the same way, if buffer is continue running, if you are not regularly washing your system, so that buffer is now started deposited in your line, so it can do the corrosion, okay। then possible bacterial growth, अगर आपका बफर आपने एनालिसिस आज कंप्लीट कर दिया और आपने बफर वहां से रिप्लेस नहीं किया, what happen,
वो लॉन्ग टाइम पे पड़ा रहेगा, इट कैन जनरेट द फंगल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ विच कैन स्टक इन योर लाइन. Okay, so ideally you have to prepare the fresh solution every day. If your system is not in use, you can keep your all the line in 50-50 organic aqueous ratio. Okay, means 50-50 water methanol, you can keep your all the line and for the ideal condition. Okay, otherwise what happen, it can generate the fungus growth if you keep the 100% water, right? And if you keep 100% organic, means it evaporate from your line, so it can generate the it can dry your tubings. Okay, to avoid these two things, we are we are doing the 50-50. Okay, so it can due to the presence of organic, your fungus growth is not happen, and due to the presence of water, your line cannot dry out. Okay, then next coming is the preparation of your solvent. ठीक है, हम जब भी बोलते हैं कोई कॉम्बिनेशन का मोबाइल फेस बनाते हैं, तो एवरी पर्सन फॉलो द डिफरेंट प्रोसीजर. तो वो क्या क्या डिफरेंट प्रोसीजर है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन की है. कि सपोज मैंने किसी को बोला कि भाई यू कैन प्रिपेयर द 50-50 वाटर मिथेनॉल, तो एक बंदा है वो क्या करेगा, दोनों को सेपरेटली 500 लेगा और 1 लीटर में मिक्स करेगा. दूसरा बंदा क्या करेगा, पहले वाटर को 500 भर देगा और 1000 तक वॉल्यूम तक वो उसको मार्क कर देगा. तीसरा क्या करेगा कि पहले 500 मिथेनॉल डालेगा, उसके ऊपर वाटर से उसको मेकअप करेगा. सो दे आर प्रोसीजिंग अ डिफरेंट प्रोसीजर, बट यू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट when you follow the different procedure, each and every time it generate the different composition. ठीक है, ideal procedure is the first one. Always follow the first one. When anyone tell you that you can prepare, this is the ratio of the mixture, you have to take the individually and mix it. Okay, never follow this 2 and 3 procedure. Okay, हमें जनरली पता है कि when water और मिथेनॉल मिक्स होते हैं, it generate the heat due to the exothermic reaction. Okay, और जब हम वाटर और ACN को मिक्स करते हैं, it generate the cooling effect because of endothermic reaction. जब exothermic reaction होता है, it expand the volume. ठीक है, जब भी exothermic reaction होता है और liquid होता है, that expand the volume. और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और वो लिक्विड होता है, इट श्रिंकेज द वॉल्यूम. ठीक है, सपोज आपने 500 ml वाटर डाला है, उसमें आप मिथेनॉल डालोगे, तो ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन योर वाटर कैन get the expand. So due to the expansion, instead of 500 ml methanol, you can adding the 480 or 450 ml. So ultimately it can gives you the instead of 50-50, you are getting the 55-45, right? So this is the reason, always follow the first number procedure, avoid 2 and 3, and everyone should follow the uniform procedure. Suppose for the any one method you follow the second number procedure, then all must be follow the second number procedure. Otherwise you can find the difference in the analysis. तो हमने कई जगह बार देखा है कि एक एनालिस्ट मोबाइल फेस बनाता है, रिजल्ट ओके आता है, दूसरा एनालिस्ट मोबाइल फेस बनाता है, there is a difference in the results. So because of that, okay, then whenever you change your mobile face, never directly add your mobile face from old mobile face to the freshly prepared mobile face. You have to wash out your sparger and tubing, intermediate solvent means rinse solvent. Okay, या तो फिर आप थोड़ा मोबाइल फेस बीकर में ले लो, उसमें पहले वॉश आउट कर दो और वो सॉल्यूशन को फेंक दो, और देन यू कैन ऐड योर लाइन इनटू द न्यू मोबाइल फेस. नेक्स्ट इज द, जब भी आप बफर सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हो आप जो लाइन में, उसको कभी भी डायरेक्टली बफर सॉल्यूशन में से निकाल के ऑर्गेनिक में नहीं डालना है, और ऑर्गेनिक में से निकाल के कभी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कभी भी नहीं डालना है. सिंपल रीजन कि भी आपको बफर को पहले वॉश आउट करना है वाटर में, देन यू हैव टू ऐड इनटू द योर एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अदरवाइज क्या होगा, समटाइम प्रेसिपिटेशन इज हैपन. ओके, सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ द प्रैक्टिस.
Next is the column. Okay. So how you can maintain your column, because it is the heart, ultimately it is your heart. Suppose अगर वो कोई हम अगर ह्यूमन बींग्स होता, देन हाउ मच वी कैन केयर. आपने अभी बहुत सारे केसेस अभी हमने देखे हैं, दैट इज द ट्रांसप्लांटेशन, राइट. लाइक अभी रिसेंटली एक केस था कि भाई सूरत से हैदराबाद तक हार्ट ट्रांसप्लांट मींस ट्रांसफर किया और ट्रांसप्लांट किया. So how much care they are taken for the transplant the heart, because heart is very important part of your body, right? Same way column is the heart of your HPLC. If you not care it, definitely you cannot get the results. Okay, so this is the image of the one customer place where he kept column like this way. So this is not a right way. If you see all the columns and cap is not there, all the column are keeping as a haphazard. We don't know what happened with that column, right? So please keep in your mind, don't keep column like this, right? It is not a good things for your HPLC. Okay, so because if we see that column, how much play important role, because it is impact in your selectivity and specificity, and it can also impact in your theoretical plates. Because when we go for the column chemistry, we know what is the impact of the column or how the separation is the occurs, right? So that is the way. And second thing is the column comes in the different chemistry. If you cannot maintain your column properly, then whatever the chemistry inside in your column, it can get disturbed. Okay, so this is the reason you have to always keep your column in a very proper way. You have to wash your column, and you have to keep your column once properly once your use is over. So these are the different chemistry of the column is now in market available. Why we require the different chemistry? Because nowadays now no any we are limited to the traditional molecule. Now day by day very challenging molecule is coming. So each molecule have a different chemistry. We don't know which molecule we have in which chemistry column, right? So this is the reason now column manufacturer also come up with the lots of chemistry option for your analysis, so it can make your analysis very easy. Okay, so we have to also understand the importance of the chemistry of the column, the importance of the care of the column, right? So what are the good practice? जो मैंने already आपको explain किया है कि once your analysis is completed, you have to wash your column at least 30 minutes after their analysis, and before the start of the analysis, you have to conditioning your column for the 30 minutes. Okay, आपने कोई भी buffer वगैरह use किया है, then first you have to wash with your water, 100% water. ओके, अगर आपने कोई बफर वगैरह यूज किया है और आप डायरेक्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कॉलम को वॉश करोगे, व्हाट हैपन, इट डज द प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ दैट बफर हैविंग अ लेस solubility in your organic solvent. Okay, so due to that it can generate the precipitation. Okay, to and it block your column. To avoid a such condition, first you can wash your column with the 100% water, then water organic 50-50, and finally with the 100% organic. Okay, then what are that reason to dye your column? आपका column क्यों खराब हो सकता है? First is the chemical attack, then material that bind to the column means like a high, आपने कभी high concentration buffer use किया है या कोई strong ionic salt use किया है, that can bound with your silica. Then things that cause the pressure increase means आपने जैसे मैंने बोला कि after using the buffer you can directly wash with the organic, so it create the precipitate inside your column which can generate the high pressure. Then column void forming due to the disturbing the arrangement of your silica particles. Okay, so what are the precaution? You have to must your filter your buffer solution, right? Then you have to also filter your sample solution. Okay,
और मैंने जो बोला है कि डायरेक्टली आप ऑर्गेनिक से बफर में जंप नहीं होना है, या तो बफर से डायरेक्टली ऑर्गेनिक में आपको नहीं जाना है. ओके, so these are the mechanical stroke due to the high flow rate. ठीक है, हम क्या करते हैं जनरली, हमारा यूज कि हमने कॉलम लगाया, हमारे मेथड में 1.5 ml का फ्लो है, वी आर डायरेक्टली स्टार्ट दी 1.5 ml. उससे क्या होगा, सपोज मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि यू हैव अ कैपेसिटी टू लिफ्टिंग द वेट ऑफ 50 kg. ठीक है, बट आप कोई भी आप जिम वगैरह में जाते हो ना, दे स्टार्ट विद द लोअर वेट. पहले आपको छोटा वेट उठाने को के लिए बोलेंगे, then gradually it increase the weight. Even though he know your capacity, you are capable to lifting the 50 kg, but they are not give you directly 50 kg weight to lift, right? So same way, यहाँ हमें पता है कि भी that column has a capacity to work in the 1.5 ml flow rate, but अगर हम उसको डायरेक्टली वो आइडियल कंडीशन में से हम जब सिस्टम पे लगा रहे हैं और उसको हम डायरेक्टली वो हाई फ्लो रेट दे देंगे, what happened, it get the pressure shock. Okay, so that is the reason it can get the disturb the column. तो पहले क्या होगा कि कल तो ये कॉलम अच्छी तरह काम कर रहा था, आज अचानक से क्या हुआ उसको, राइट? इवन आप बोलोगे कि मैंने प्रॉपर्ली वॉश करके रखा था, फिर भी मेरा कॉलम आज परफॉर्म नहीं कर रहा है. So that is the reason. Okay, then now we move to the HPLC troubleshooting. ओके, जैसे कि हमने कॉलम का देख लिया, पंप कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, अभी नाउ व्हाट आर द जनरल ट्रबल शूटर यू आर फेसिंग. ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम आने का सोर्स क्या है? योर मोबाइल फेस, योर इंजेक्टर, योर पंप, सैंपल, कॉलम, डिटेक्टर, ट्यूबिंग एंड कनेक्टर. So these are the all the probable or suspected things which can cause the troubleshooting or HPLC. Okay, तो आपको सिंपली क्या करना है, always simplify the problem source. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है it is due to the chemistry or it is due to the mechanical. Okay, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने एक मेथड किया है, 3 महीने तक वो मेथड सही चल रहा है, 3 महीने के बाद आपका मेथड में कुछ इश्यू आ रहा है, तो आपको केमिस्ट्री पता है कि नहीं, मैंने जो सेट किया है मोबाइल फेस, डाइल्यूएंट वगैरह, दैट इज ओके, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम विथ योर कॉलम बिकॉज ऑफ योर व्हाट आई कैन से, यू कैन नॉट केयर प्रॉपर्ली विथ योर कॉलम, और due to the age of the column. Age means it has some limitation. Suppose some column work on the 500 injection, some column work on the 1000 injection. So it reach that injection number of the injection, it can now gives you the trouble. So what is the solution? You have to change the column. Okay, so you have to just simplify or categorize your problem. If that problem might be due to the column or due to the chemistry or due to the any mechanical things. Okay, so what are the generally problem is coming for pressure? It is the low pressure, pressure fluctuation, high pressure, then unstable baseline. It gives the drift noise, spike, right? So this type of the baseline it can give. Then distorted peak means you can get the tailing, fronting, splitting, broadening of the peak. Then retention time, change in the retention time. Okay, so these are the troubles. These are the main troubles where comes when you are work with the HPLC. Okay, what is the reason of the high pressure? ठीक है, आप सिंपली मैं आपको बोलूंगा why we have a get a hypertension. The simple answer is that because cholesterol level deposited in your veins, right? It can generate the high pressure, or might be it, partially blockage of any veins which can generate the high pressure, or due to the high pressure in your heart which can generate the high pressure, right? So these are the some reason for the hypertension. Same way for the system, same thing is applicable, right? So due to the high pressure because of partially blockage of your any tubing, right? Due to the pressurize in your pump, it can generate the high pressure. Due to the blockage in the column, it can generate the high pressure.
due to the blockage in your detector cell, it can generate the high pressure. Okay, so these are the reason. So you have to evaluate one by one. Okay, so first आपको क्या करना है? You have to just remove the detector part and you have to check the pressure. Even now continue pressure is continue, you have to remove the column outlet tubing. Then you have to check the pressure, whether pressure comes due to the column or not. Still the pressure is there, you have to remove the column. Once you remove the column, if you get the normal pressure, it confirm that your column is the generate the pressure. So that is the one by one you have to identify where that pressure is generated. Okay, so that is the first troubleshooting. Okay, then next is the pressure fluctuation. So what are the reasons for the pressure fluctuation? So it might be a air bubbles, leakage, or check wall are dirty, plunger seal is dead, plunger seal is spoiled. So these are the all the probable reason. Okay. So first, if air bubble is there, you have to purge your system. If you not properly purge, or if you are not giving the time properly for the purging of your system, means it can generate the air bubbles. Okay. So to remove the air bubbles from your system, you can get the solution. That is the general problem. Okay, air bubble. So you have to must first step is your that you have to purge your system thoroughly. Okay, then you have to check the leakage. Okay, column connection, detector connection, everywhere you have to check the leakage. Is there any leakage is there or not? Okay, if this two thing is not there, then definitely it is problem with your plunger seal or any check one. Okay, so then you have to call to the engineer. He can come and he can replace that requirement part, and you can get the smooth baseline. Then हाँ, जो मैंने आपको बताया वही कि you have to check your system very systematically. You have to check the everything by one, and you have to identify that. Okay, if you able to identify the problem, then it is very easy to explain to the engineer. If you are convinced the engineer with the problem, then he come up with the solution. अदरवाइज क्या होगा, आप उसको बोलोगे प्रेशर फ्लक्चुएशन आ रहा है बट मुझे पता नहीं है व्हाट विल बी द रीजन. वो क्या करेगा, पहले आके देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, बाद में उसको पता चलेगा कि नहीं दिस इज द मैकेनिकल डैमेज इन योर सिस्टम. तो बाद में क्या करेगा, वो पार्ट लेने जाएगा. नेक्स्ट डे इट कम वी रिप्लेस दी पार्ट. बट आपने ही पहले उसको आइडेंटिफाई करके दिया है कि मैंने ये सब सारी चीजें चेक कर ली है. There is a no issue, there is a no air bubble, there is a no any dry out in the line, there is a no any column issue. Okay, then he understand, okay, that might be a issue with your mechanical part. Then he come with the mechanical part, so it can save your downtime. When you goes into the industry, the downtime play very important role, because in every day they are getting the many number of the sample for the analysis. If you lose one day, means you are now pressurized with the more number of the sample. So how you can minimize that downtime, it is very important, right? So for that you have to check very systematically, you have to identify the problem, you have to explain the problem to the engineer, so he come up with the perfect solution. Okay, now next is the baseline issue. So these are the type of the issue we are facing when we are doing the analysis with the HPLC. There is noisy baseline, cyclic baseline, spikes comes into the baseline. Short means at a some frequent time interval it gives the peak, right? Then drift means early start baseline normal, but after some time it now start to increase the baseline, right? Then positive negative peak is coming. So these are the some baseline issues. So what are the probable reason to come the baseline issues? One is the contamination of the column. Your detector cell is dirty. System is not sufficiently stabilized, means you are not stabilizing your column. Then system is contaminated, means you are not properly wash your system, right? Then weak detector lamp, your lamp energy is not good, leakage in the system, unstable pumping means your pump is not sufficiently giving the flow rates. Then mobile phase is not degassed, means it generate the air bubbles.
देन इलेक्ट्रॉनिक नॉइज, देन टेम्परेचर। ओके, जहाँ पे भी आपने सिस्टम रखा है वहां का रूम टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है एंड आप कभी भी लो वेवलेंथ पे काम कर रहे हो, देन यू आर फेसिंग अ सच काइंड ऑफ द इशू। तो आपको ये सभी चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि वेयर इट कैन बी अ कम्स। ओके, so if you able to identify these things, you can resolve your baseline issue. Okay, then next coming is the peak shape issue. Generally peak shape issue is due to your column, due to your diluent and mobile phase. So these are the three probable things which can gives you the peak shape issue, like broadening, shoulder peak, then peak splitting, tailing, fronting, right? So these are the issue. Like a broader peak means if you are not selecting the proper diluent or mobile phase, which can give the broader peak, or sometimes we are injecting the high concentration of the sample which can do the overload of your column, और कोएल्यूटिंग पीक मींस आपके पीक के साथ ही दूसरा पीक इल्यूट हो रहा है जो मर्ज हो गया है, सो इट कैन गिव द ब्रॉड पीक। देन कंटामिनेटेड ऑफ कॉलम, रिटेंशन टाइम आपका ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको ग्रेडियंट का एग्जांपल दिखाया था कि जो लेट इल्यूट हो रहा है इट कैन गिव यू द ब्रॉड पीक। सिंपल चीज है कि जहां कोई भी चीज है वो लॉन्ग टाइम कहीं पे रहती है, इट कैन गेट द लेजी। ठीक है, जैसे कि हम है कि हम बहुत ज्यादा टाइम घर पे ही ऐसे बैठे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले बैठे होते हैं फिर हम पूरे फिर लेट जाते हैं बेड पे, राइट? और हम पूरा दिन ऐसे ही बैठे। सेम वे अगर कोई कंपाउंड है जो ज्यादा टाइम आपका कॉलम पे स्पेंड करेगा तो उससे क्या होगा, इट कैन गेट स्प्रेड आउट, वो आलसी हो जाएगा, वो जो अपने स्पीड से जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, इट कैन गेट स्प्रेड आउट, सो इट कैन गिव द ब्रॉड पीक, राइट? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका रन उसका रिटेंशन टाइम तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, नहीं है, यू हैव टू चेंज द कॉलम। आपने कॉलम चेंज किया फिर भी आ रहा है, यू हैव टू चेक योर मोबाइल फेज। आपने मोबाइल फेज चेंज किया फिर भी आ रहा है, यू हैव टू चेक योर डाइल्यूएंट। ठीक है, कि भी आपके डाइल्यूएंट से कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं आ रहा है, ये सब कुछ आपने चेक कर लिया फिर भी आ रहा है, देन यू कैन thoroughly wash your system because it may be come due to your system get contaminated. Okay, then splitting, तो सेम ऑलमोस्ट सेम वही सब चीजें हो सकती है। कॉलम डैमेज है, मोबाइल फेस प्रॉपरली अंदर मिक्स होके नहीं जा रहा है जो रेशियो में जाना चाहिए, आपके कॉलम के अंदर अगर कोई बफर का क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इट जनरेट द वॉइड्स, बिकॉज ऑफ वॉइड्स यू कैन गेट द एम शेप पीक। ठीक है, तो दिस आर द ऑल द रीजन। आप देखोगे एवरीवेयर सम रीजन आर वेरी कॉमन, तो आपको वही कॉमन रीजन को पहले फाइंड आउट करना है कि यह तो है नहीं ना, राइट? देन नो पिक, अल्टीमेटली या तो आपने गलत सैंपल इंजेक्ट कर रहे हो, या तो आपने भूल से इंजेक्शन वॉल्यूम कम दे दिया है, आपने डिटेक्टर का लैंप ऑफ रखा है, या तो आपके सिस्टम में कहीं पे लीकेज वगैरह है। सो दीज आर द मेनी रीजन व्हिच कैन गिव्स यू द स्ट्रेट बेसलाइन मींस नो पिक। ओके, देन चेंजिंग द रिटेंशन टाइम, तो वह यहाँ पे भी यू कैन सी द सेम रीजन आर रिपीटेड, कंटामिनेशन, इक्विलिब्रेशन टाइम इज नॉट सफिशिएंट मींस मैंने बोला कि आप जब भी एनालिसिस स्टार्ट करते हो यू हैव टू कंडीशनिंग योर कॉलम एटलीस्ट 30 मिनट with your mobile phase before the start of the analysis. Okay, then unstable column temperature, leakage, then unstable pumping, so ये सभी reason है जो you can give the, it can give the fluctuation in your retention time. Okay, so ultimately you have to find out the problem, you have to identify the problem, then you have to confirm the problem. अगर आपके पास the problem is normal means you have to rectify the problem, and you have to check, once you rectify you have to confirm that whether it is okay or not, and then again you can start your work. So this is the way you can carry out your process. If you are find out that that problem is due to some mechanical damage, you have to inform the engineer, he comes, he replaces the parts, and again your system get start. Okay, so first you have to identify the facts. ठीक है, हमें कोई थ्योरी पे नहीं जाना है, ओके ये हो सकता है वो, नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू कंफर्म द थिंग्स कि ओके ये प्रॉब्लम है, तो दीज आर द प्रोबेबल थिंग्स,
और ये प्रोबेबल थिंग्स में से यहाँ किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दैट थिंग्स यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंट। ओके, आपको जो भी पॉसिबल कॉजेज है उसको लिस्ट आउट करना है, देन जो भी इजीएस्ट वे है यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू डू योर ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ओके, सो गुड हैबिट क्या है आपकी कि यू हैव टू मेंटेन योर लॉग बुक रिकॉर्ड। तो आपको जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो और आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, ऑलवेज कीप द रिकॉर्ड। तो क्या होगा, आपके बाद अगर कोई दूसरा कोई बंदा आता है, if he face the same issue, then he cannot waste the time to identify that issue. Okay, he directly refer your note and he implement it, so it can ultimately save your downtime, it can ultimately improve your teamwork. Okay, अगर आपको टीम में किसी को एक प्रोजेक्ट असाइन किया है और टाइमलाइन असाइन किया है, so because of that reason you cannot lose your timeline, right? So to save your downtime, you can always keep practice to maintain all these things in your logbook. Okay, so this all about the troubleshooting and instrumentation. If you have any question, we can address the question, or and I can move to the second part for the demonstration of the software. So thank you very much. I hope you all understand very well. Thank you. Any question? Okay. So I can move to the directly to our instrument. I can just show you the software part. Okay. So okay, just a minute. I just share my screen for the software. Okay, so I hope everyone can visible my screen. Okay, so we are representing Simarzu HPLC. So we are using the lab solution software for the analysis of our compound or whatever the analysis you are doing, that can be done by the lab solution software. और मैंने जैसे आपको बताया कि now there is a scope of manual injector, so everything is by the auto sampler. Okay, so this is the lab solution main window. Okay, यहाँ पे आप देखोगे there is a different instrument is connected. Okay, so I just open that instrument. Okay, तो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट वहां कनेक्ट होगा और एक आपको रियल टाइम विंडो देगा. ओके, तो यहाँ पे वी आर प्रिपेयरिंग द मेथड, वी आर प्रिपेयरिंग द बैच एंड वी आर इंजेक्टिंग द रन एंड फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे LC इज इन रेडी मोड. तो ये जो है आपका वो रियल टाइम विंडो है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा आपका मेथड का विंडो है, राइट. तो यहाँ पे आपको ABCD मोबाइल फेज दिखेंगे बिकॉज इट इज द लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम. तो यहाँ पे क्वाटनरी मोबाइल फेज है, तो 4 मोबाइल फेज आप रख सकते हो. ठीक है, आप मोबाइल फेज के नाम भी दे सकते हो. सपोज यहाँ पे C को नाम दिया है वाटर, D को नाम दिया है एसीटोनाइट्राइल. ओके, और अभी C और D में से ही मोबाइल फेज आपका चल रहा है, बराबर. फिर जाता है वो आपका पंप में, पंप में से जाएगा आपका ऑटो सैंपलर में, ऑटो सैंपलर में से जाएगा ओवन में. यहाँ पे आप देखोगे यू कैन सी द 6 कॉलम. ठीक है, अभी हमने 1 नंबर पे कॉलम को अटैच किया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 नंबर. जैसे ही मैंने 6 के 6 कॉलम लगाया है और जो कॉलम में से आपका मोबाइल पेज पास हो रहा होगा वो कॉलम ऐसे ही हाईलाइट होके आपको दिखेगी. तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन से कॉलम में से अभी रन हो रहा है. Then it goes to the detector. So this is your UV detector. Okay, तो यहाँ पे हम मोबाइल फेज में क्या पंप के लिए क्या पैरामीटर डिफाइन करेंगे हम, फ्लो रेट क्या है उसका. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्लो रेट डिफाइन करूंगा. सपोज कि मैंने फ्लो रेट किया है अभी 0.5 ml, 0.5 ml, उसको अप्लाई किया.
ओके, तो यहाँ पे आपका 0.5 ml फ्लो रेट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा C और D कंसंट्रेशन चल रहा है। अभी C जा रहा है 20%, मीन्स 20% वाटर जा रहा है और 80% मेरा ये जा रहा है। उसके कारण जो प्रेशर जनरेट होता है वो आपको प्रेशर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। दिस इज द पंप प्रेशर। उसके बाद आता है आपका ऑटो सैंपलर। यहाँ पे आपको सिर्फ रिंजिंग पैरामीटर डिफाइन करने हैं। देन इट कम द कॉलम ओवन। तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर डिफाइन करना है कि मुझे ओवन का टेम्परेचर कितना रखना है। सपोज मैंने 40 किया है, 40 का मैं अगर 45 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो 45 डिग्री टेम्परेचर ले लेगा, राइट। आप कहाँ तक दे सकते हो? अप टू 85 डिग्री। जैसे मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया, यहाँ पे देखिए आप ब्लिंक होने लगा ओवन। दैट मीन्स इट ट्राइंग टू अचीव दी 45। अभी उसका 40 है, वो 45 तक जाएगा, राइट। ओके, अभी मैं वापस उसको 40 कर देता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा? वेट ओवन। तो जब तक वो टेम्परेचर अचीव नहीं होगा तब तक वो आपका इंजेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ जो भी पैरामीटर आप डिफाइन करते हो, अगर वो पैरामीटर वहां पे अचीव नहीं हो रहा है टेम्परेचर, तो तब तक वो आपका इंजेक्शन नहीं लेगा। ओके, देन इट कम्स टू द डिटेक्टर। तो यहाँ पे आपको जो वेवलेंथ पे काम करना है वो वेवलेंथ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ओके। उसके बाद ये हुआ आपका मेथड का विंडो। फिर आता है यहाँ आपका डिस्प्ले का ग्राफ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्रोमेटोग्राम का एक पूरा विंडो है, राइट। ये क्रोमेटोग्राम का विंडो है, ओके। देन उसके बाद आपका एक यहाँ पे जो भी रन चल रहा होगा वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये विंडो पे ही दिखेगा, ओके। अभी ये बेसलाइन आ रहा है, जस्ट आई कैन जस्ट शो यू द बेसलाइन। Detector is off, so it will not show. Okay, detector is off, so we can on the detector, okay, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने ऑडिट ट्रायल एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। ऑडिट ट्रायल एक्टिवेट मींस आप जो भी कुछ चेंज करोगे आपको उसका रीजन देना है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वी हैव टू वर्क ऑन द कंप्लायंस, वी हैव टू वर्क ऑन द अंडर 21 CFR कंडीशन, ठीक है। तो अगर आप कोई भी रेगुलेटरी वगैरह के लिए काम करते हो तो यू हैव टू डिफाइन द ईच एंड एवरी चेंज का आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ फ्लोराइड चेंज किया 1 ml से 0.5 ml, कुछ भी किया तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये चेंज किया है, अप्लाई ओके करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रन चालू यहाँ पे। ओके, ये आपके डिटेक्टर के पैरामीटर है, ठीक है। आपने कौन से वेवलेंथ पे काम करना है आपको, सेल आपका कौन सा लैंप यूज होने वाला है, तो यहाँ पे D2 लैंप होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सी वेवलेंथ पे आपको देखना है वो सब यहाँ पे डालना है। अभी डाउनलोड क्लोज। अभी यहाँ पे आप देखोगे, अभी आपको ये बेसलाइन दिखेगा यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये बेसलाइन है, ठीक है। तो जब भी कोई भी सैंपल आपका पास होगा इट कैन शोज यू द पीक, ओके। तो ये आपका पूरा रियल टाइम विंडो है। एक बार आपने एनालिसिस कर दिया, फिर आपको अगर डेटा देखना है तो देयर इज अ सेकंड ऑप्शन, दैट इज वी हैव अ डेटा प्रोसेसिंग सेक्शन। सो देयर इज अ टू पार्ट, पोस्टर एंड ब्राउजर। तो हम यहाँ पे आपको कैलिब्रेशन कर्व वगैरह का दिखाएंगे ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। तो इसमें सपोज कि मेरा जो भी डेटा, मैंने जो भी कंसंट्रेशन वगैरह डाला है, सपोज कि मैंने कैफीन का है ये, ठीक है। तो कैफीन का आप देखोगे देयर इज अ लिनियरिटी, उसका ये रिटेंशन टाइम, एक क्रोमेटोग्राम है, उसका एरिया है, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शन whether you can plot the calibration curve by area or by height, ओके। तो आप हम जनरली एरिया प्रेफर करते हैं, वी आर गिविंग द एरिया, ओके। तो एरिया के बेस पे हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसके कंसंट्रेशन है वो डिफाइन किए, 20, 30, 40, 50, 60, राइट।
तो ये जो कंसंट्रेशन है दैट इज वी कॉल्ड एज ए लेवल। तो यहाँ पे मैंने लेवल 1 2 3 4 5 5 लेवल डिफाइन कर दिए। तो उसका जो भी कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन आया वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, प्लस मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन भी आएगा आपका। ठीक है, आपने थियोरेटिकली क्या कंसंट्रेशन डिफाइन किया था और प्रैक्टिकली आपका कितना आया, और उसके बेस पे आपका एक्यूरेसी कितना आ रहा है, राइट। तो ये आपको एक्यूरेसी दिखाएगा यहाँ पे, परसेंटेज डिफरेंस बोलो या तो एक्यूरेसी बोलो। ठीक है, दिस इज एक्यूरेसी। अगर आपको परसेंटेज डिफरेंस देखना है ओके, तो कितना परसेंटेज डिफरेंस है आपका, देखिए 0.42%। कि आपने स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन थियोरेटिकली आपका था 20, बट आपने प्रैक्टिकली कितना बनाया 20.083, तो वो कितना परसेंट का डेविएशन आया 0.42%, राइट। और आपका एक्यूरेसी कितना है 100 to 100.4। जनरली आपका एक्यूरेसी का क्राइटेरिया 80 to 120% रहता है, ठीक है, या तो 80 to 110%, उसके बीच में आना चाहिए। या तो आपका परसेंटेज डेविएशन प्लस और माइनस 20% पे आना चाहिए, या तो 15%। तो बेस्ड ऑन वो आईसीएच गाइडलाइन में सभी क्राइटेरिया आपको दिए हुए हैं कि भाई आपको किस तरह से रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे ही ये मैंने लिनियरिटी डाला, अभी उसी के अंदर में मेरा अननोन सैंपल कोई इंजेक्ट करूंगा। सपोज कि मैंने ये अननोन सैंपल इंजेक्ट किया, तो उसका कंसंट्रेशन क्या आता है वो मेरा कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सैंपल मैंने ऐसे अननोन इंजेक्ट किए थे, तो क्या हुआ, उसका कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन मुझे बता दिया कि आपने जो इंजेक्ट किया था उसका कंसंट्रेशन है 20.2, राइट। तो ये इस तरह से आपको कैलिब्रेशन कर्व बनाना है नॉन कंसंट्रेशन से। उसके बाद अगर आप उस पे अननोन सैंपल कुछ भी डालते हो तो वो अननोन का कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन आपको बताएगा। इसके बाद इसका जो भी प्यूरिटी, मल्टीप्लिकेशन और डाइल्यूशन फैक्टर होता है वो हमें अप्लाई करना है। तो आपको एग्जैक्टली आपका कितना कंसंट्रेशन है अननोन का वो आपको यहाँ पे बता देगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये मेथड का विंडो बताया, आपने एक बार मेथड बना दिया, उसके बाद आपको मेन में जाके रियल टाइम बैच होता है, तो आपका इस तरह से बैच खुलेगा। आपको यहाँ पे वाइल पोजीशन डिफाइन करना है, ट्रे पोजीशन डिफाइन करना है, आपको सैंपल का नाम देना है कि आपने क्या सैंपल रखा है, ठीक है, और आपका सैंपल टाइप कि आप स्टैंडर्ड रखा है, अननोन रखा है कि क्या रखा है। और उसके बाद आपने जो मेथड सेव किया है वो मेथड को यहाँ पे लोड करना है, और यहाँ पे आपको डेटा फाइल नेम देना है। उसके बाद आपको इंजेक्शन वॉल्यूम कि भाई आपको कितना इंजेक्शन वॉल्यूम इंजेक्ट करना है, 5 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर, बराबर। तो उस तरह से आपको ये सब कुछ डिफाइन करना है बैच में। फिर आपको पूरा बैच सिलेक्ट करके और उसको यहाँ पे स्टार्ट बैच ऐसे आप क्लिक करोगे तो अपने आप 1 by 1 इंजेक्शन वो रन करेगा, ठीक है। 1 by 1 इंजेक्शन वो अपने आप ही रन करेगा। फॉर अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझना है तो मैं आपको एक विदाउट वायल का एक इंजेक्शन मार के दिखाता हूँ। सपोज अभी मैं वायल पोजीशन -1 दे रहा हूँ, -1 मीन्स नो वायल, ठीक है। 1 सैंपल नेम में देता हूँ टेस्ट, सैंपल आईडी इज आल्सो टेस्ट, अननोन टाइप, सैंपल मेथड, डेटा फाइल में यहाँ पे लिख दूंगा। आज का डेट है कि भी 24/09/21_001, ठीक है। इंजेक्शन वॉल्यूम में 10 रख रहा हूँ, ठीक है। ये एक मैंने बैच बनाया, इसको सेव करता हूँ मैं। तो ये पूछेगा कि आपको क्या नाम से सेव करना है, तो मैं कर दूंगा test1 और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा बैच एक सेव हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं 2 इंजेक्शन हम करेंगे।
ठीक है, तो ये अपने आप ही इंक्रीमेंट में डेटा फाइल नेम ले लेगा और ये 3 सैंपल का मैंने एक बैच बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेथड का नाम क्या है, टेस्ट ही है मेथड का नाम, बराबर। और इसका अभी हमने रन टाइम कितना दिया हुआ है, 6 मिनट। तो आप देखोगे कि 6 मिनट के बाद वो अपने आप दूसरा रन ले लेगा। ओके, तो अभी आपको प्रैक्टिकली, ठीक है, ये मैंने किया। अभी ये मैं 2 सैंपल को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो ये अपने आप ही रन ले लेगा। ठीक है, आपको मैन्युअली इंजेक्ट नहीं करना है, आपने जो भी इंजेक्शन वॉल्यूम वगैरह दिया है तो उसके बेस पे ये अपने आप इंजेक्शन लेगा। अभी क्या करेगा, वो इंजेक्शन करेगा और ये 6 मिनट तक ये रन चलेगा। 6 मिनट के बाद वो अपने आप दूसरा इंजेक्शन लेगा। ओके, अभी हम कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बेसलाइन हमें अभी 0 पे ही दिखेगी। ठीक है, मोबाइल फेस की, क्योंकि हमने कुछ भी इंजेक्ट किया नहीं है। वी आर गिविंग द -1 इंजेक्शन। बराबर, तो ये जो आप देखोगे तो आपको जो दिख रहा है वो बेसलाइन है, बराबर। तो अभी ये 0 पे जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर यहाँ पे कुछ भी आता है एब्सॉर्बर्स तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये जो मिलीवोल्ट लिखा है ना, अभी 0 मिलीवोल्ट लिखा है। दैट मीन्स इनके आपका बेसलाइन अभी 0 से ही जा रहा है। ओके, जैसे ही कुछ कंपाउंड कुछ भी आएगा, अगर इसमें कुछ कंटामिनेशन ऐसा कुछ होगा तो अपने आप वो पीक जैसा दिखाएगा। अदरवाइज आपका बेसलाइन स्मूथली 0 6 मिनट तक ऐसे ही रन होगा। ओके, अपने आप ही वो बाद में दूसरे रन में चेंज ओवर ले लेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ मेथड में किसी को कुछ डाउट है कि भाई क्या हम क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखना है, क्या जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कुछ आपको पता नहीं चला हो, कोई क्वेश्चन? अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं बस बोलता रहा और आप सुनते रहे। I just have one request. सारे यूजर है, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए तो पता चले हमें। ओके, कोई क्वेश्चन है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को? See, all dear student, sir is already said that if you have any question, then ask, because this is a dual interaction. If you ask the technical person, solve your whatever the mind query related to HPLC. Okay, so you can ask, freely ask, because sir is already told that if one side, then what is meaning that you are listening or just throughout. But dual means you have to give on your inputs. So more interesting your session. So make this session more interesting. So you can learn something. ठीक है, अभी अभी हमारा 2.75 मिनट हुआ है टोटल टाइम। तो रोज कोई कैफीन का वायल पड़ा है क्या अंदर? हाँ, just I prepared one vial. ठीक है, We can go live demonstration for with the caffeine injection. ओके, तो कोई बात नहीं, ये चेंज ओवर दिखा देते हैं, इसके बाद इसको स्टॉप कर देना, हाँ, राइट? ठीक है। ओके, और देन वी हैव टू इंजेक्ट वन इंजेक्शन फॉर द कैफीन। तो आपको प्रैक्टिकली दिखेगा कि हाउ इट लुक लाइक, वो कैसे आपको लाइव दिखेगा। I'll just update the method right now. Okay. ओके ओके, That's
-1 છે. ओके अभी 4.67 मिनट हुआ है उसका. हुआ रन पति जाओ ना मानो. ओके तो जैसे ही 6 मिनट होगा आपका वो चेंज ओवर लेगा नेक्स्ट रन में. ठीक है, तो इस तरह से आपके अगर 100 सैंपल है 50 सैंपल है आप पूरा एक बैच बना दो और इसको इंजेक्ट कर दो. वो अपने आप ही 1 बाय 1 इंजेक्शन करेगा. आपको नेक्स्ट डे आके क्या करना है, सिर्फ उसका डेटा इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद उसको रिपोर्ट करना है. कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन दो आना चाहिए एटलीस्ट. हाँ क्या बाकी है तो एक्सीडेंट अब एक बार पता दे दो तो वांचे ना के तो एक मानस आवश्यक ना करूँ एचपीएलसी में. हाँ ये नीचे ओके अभी आप देखोगे ये रन खत्म होगा और नेक्स्ट रन આજે આ लेगा. પ્રેક્ટિકલ સેશન અત્યારે ચાલુ છે જોઈન થઈ જાય ચીમાંજુ વાળા છે ચાલુ થઈ ગયું. હા મેં તો અત્યારે ओके नाउ यू कैन सी अभी उसने नेक्स्ट रन लिया बराबर. इंजेक्शन तो इस तरह से वो अपने आप ही એટલે શેર કરી છે 1 बाय 1 इंजेक्शन लेता है. એટલે આપણો ચાલુ તો નહીં થઈ આપણો એ તો પછી તમારો વાળો તો બીજો હતો ત્યારે કેવું છે ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા આવતા હોય ને ઇન્ડસ્ટ્રી વાળાને ગમે તે જોઈ લીધા. ठीक है अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और हम अभी कैफीन का इंजेक्शन मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पीक क्रोमेटोग्राम जनरेट होता है. राइट सरोज नाउ कैन डू द कैफीन इंजेक्शन. छोड़ दे तू. ના વાંધો નહીં તમે કરો. 1 नंबर अच्छे ना. ના 54 54 54 ट्रैक नंबर 4 फाइल नंबर ओके 54 ट्री ओके नंबर 4 ट्रेन नंबर 4 राइट. ओके वॉल्यूम 5 इंजेक्शन वॉल्यूम 5 हायर कंसंट्रेशन. ओके ठीक है तो अभी हम ये इंजेक्ट करेंगे. अभी ये क्या पूछ रहा है कि मैंने बैच में चेंज किया है तो उसको सेव करना है. ओके अभी आपको ये पूरा विंडो में आप देखोगे कि जब भी उसका पीक आएगा. ठीक है अभी प्री ट्रीटमेंट मींस वो सिरिंज को क्लीन कर रहा है. अंदर जो हमारा नीडल होता है जहां से इंजेक्शन होगा उसको अभी वो पहले क्लीन करेगा तो उसको हम प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं. ठीक है तो वो रिंजिंग सॉल्यूशन आपको रखना है क्लीनिंग के लिए. ठीक है यहाँ पे आप देखो अभी बेसलाइन स्टार्ट हो गया. ओके अभी आपका बेसलाइन 0 है. जैसे ही पीक आएगा यहाँ पे पीक बनेगा आपको दिखेगा कि वो बेसलाइन में ऊपर जा रहा है. ओके तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका डाइल्यूएंट कंटामिनेट नहीं होना चाहिए. आपका मोबाइल फेस भी क्लियर होना चाहिए. आपका कॉलम प्रॉपर्ली कंडीशनिंग हुआ होना चाहिए. ये सब चीजें होगी तभी आपको ये बेसलाइन 0 से मिलेगी. अदरवाइज आपको स्टार्टिंग से ही बेसलाइन में कुछ नॉइज वगैरह आता रहेगा. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि भी आपका वो कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए. आपका कॉलम भी प्रॉपर्ली वॉश होना चाहिए. अगर कॉलम भी वॉश नहीं होगा प्रॉपर्ली तो भी आपका बेस लाइन में नॉइज आएगा. इट नॉट गिव्स यू अ स्ट्रेट 0 बेस लाइन.
रिटेंशन टाइम इज अराउंड 3 मिनट्स, तो 3 मिनट के आसपास वो पीक आना चाहिए आपको। No. This mobile is different. So Okay. the peak will come around after 5 or around 5. Okay. So we need to increase run time. As well as columns are different. Mm-hmm. कोई क्वेश्चन? आगे के थियरी सेशन में आपको कुछ पता चला हो, ऐसा कोई एक बोलेगा कि आपको क्या पता चला उसमें से? कि बस सर्टिफिकेट लेने के लिए आप एक कोर्स कर रहे हो? हॉस्पिटल गई थी। नहीं, हमारे वहाँ पे तो नहीं था ट्रैफिक इतना, मैं हॉस्पिटल गई थी। आपको मेरे जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर दिख रहा है ना, दैट इज योर LC-MS, ठीक है। HPLC के साथ जो मास डिटेक्टर आता है उसका पिक्चर है पूरा। अशोक सर, आपको कोई क्वेश्चन है? आपके वहाँ जो HPLC है उसमें आप यूज करते हो, उसके रिलेटेड? नो सर, फिलहाल तो मीन्स अभी हमारा क्या है कि हमारे जो HPLC ऑलरेडी वर्कआउट है, तो हम जब भी वर्क करते हैं तो मीन्स अकॉर्डिंग टू ड्रग many time issue comes, so at that time we have to contact. For example, last year we have to problem with the, for example, column blockage. So at that time we have to contact because of buffer not properly washed out. By mistake, student directly injecting the buffer without filtration and column is blockage. So at that time technical expert we have to communicate and related to that part. So same thing when when we have our student are workout, at that time if they have question, then surely we have to contact you and solve out that problem. ठीक है, अभी देखिए आप बेसलाइन में माइनर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके मोबाइल फेस वगैरह के कारण आ सकते हैं वो सब चीज। देखिए ये बेसलाइन है, ये अभी पूरा जूम किया हुआ बेसलाइन है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, राइट, क्योंकि अभी इसका एब्जॉर्बेंस 1 मिलीवोल्ट से भी कम है। Flow rate is you have changed the flow rate 0.5. 0.5. So increase the activation time. Okay, can increase to 12 or 10, yeah, because it was 1 ml previously. So the next portion of the lecture is for multiple locations. Multiple locations may integrate to the enterprise story. The enterprise is enterprise use. So we have a sample.
इसके बाद आपको हम लाइव इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे। ओके, जो जो पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओवन है, ऑटो सैंपलर है, तो वो हाउ इट लुक लाइक। ठीक है, आपने पिक्चर में देखा कि इस तरह से दिखेगा, बट सही में वो प्रैक्टिकली वो इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखेगा, तो दैट वी कैन शो आफ्टर दैट इंजेक्शन। ओके, Beyond this also we have a lot of we have quality assurance, QAS, अलग प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे प्रोडक्ट से QAS, quality assurance management system, then we have training modules which are strong, then we have document management system, then we have EBRMS, ठीक है, अभी आप देख रहे हो, देखिए आपका पीक आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्रोमेटोग्राम आया। अभी आएगा। तो ये देखिए बाजू में एक पीक आ रहा है, कोइल्यूटिंग पीक, दैट इज वी कॉल्ड एज ए कोइल्यूटिंग पीक। ये तो आपका फाइनल कैफीन का पीक आ गया। बहुत दिनों से कैफीन पड़ा रहा होगा, इसलिए वो दैट गिव्स द सम कंटामिनेशन। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन डू योर एनालिसिस। ठीक है, आपका एक क्रोमेटोग्राम पे पीक आ गया, तो आपको ये पूरा दिखेगा यहाँ पे इस तरह से लाइव में। ओके, अभी इसको मुझे इंटीग्रेशन करके मुझे इसका एरिया देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया दिखा रहा है वो कैफीन का है आपका। ओके, क्योंकि आपका बेसलाइन एकदम 0 में था, तो यहाँ पे उसको पीक दिखा, तो उसने अपने आप ही पूरा इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये क्रोमेटोग्राम पे ये दिखेगा, और ये इसका एरिया है, ये उसकी हाइट है। उसके आगे जो पीक आ रहा है उसको भी इंटीग्रेट किया, तो उसका एरिया इतना है। आप देखोगे तो वो भी पीक पूरा प्रॉपरली इंटीग्रेट कर दिया है, बराबर। यहाँ पे देखिए, ओके, तो ये भी इंटीग्रेट किया। ओके, तो उसका एरिया भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप आपका एनालिसिस वगैरह करके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। ओके सर, नाउ आई कैन जस्ट स्टॉप द शेयरिंग। Now we just show you the hardware, and then we conclude the our session. Okay. So everyone request to make a speaker view, so you can see the hardware video. Okay, you can make it as a speaker view. Should I start or? Should I start or should I wait? No, start. Okay, no problem. Thank you for confirmation. Okay. तो सबने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया था HPLC. ओके, तो दिस इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल. ओके, जैसे कि हम जब थियरी पढ़ते हैं तो उसमें कैसा होता है कि सारे मॉडल अलग अलग आते हैं.
दिस वन डिटेक्टर, जो ऑटो सैम्पलर है वो ये है, यहाँ पे पंप है, ओके, यहाँ कॉलम 1 है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और मतलब सब कुछ एक ही साथ में इंटीग्रेटेड है, बाकी तो अलग से होता तो इस तरह दिखा देगा कि ये डिटेक्टर है, ओके, या तो फिर इस तरह आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेक्टर है, यहाँ पे कंट्रोलर है, फिर डिटेक्टर आएगा, फिर पंप आएगा, ऑटो सैम्पलर आएगा, कॉलम 1 आएगा, ओके, और वहाँ पे लिखा भी होता है, जैसे कि यहाँ पे है तो डी गैसिंग यूनिट है तो यहाँ लिखा भी है दिस इज डी गैसर, ओके, यहाँ पे कंट्रोल पैनल है तो कंट्रोल पैनल है, डिटेक्टर होगा, ये पंप है तो फिर पंप लिखा होगा, ओके, ऑटो सैम्पलर है तो यहाँ पे ऑटो सैम्पलर भी लिखा होगा, ठीक है। तो आप जो हम पढ़ते हैं थियोरिकल कॉन्सेप्ट में, तो उसमें कैसा होता है कि सारे मॉड्यूल अलग अलग होते हैं, तो दिस इज दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ये मॉड्यूलर सिस्टम है, ओके, यहाँ पे यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी मॉड्यूल, मतलब ये पंप है, एक डिटेक्टर है, डी गैसर है, कंट्रोलर कॉलम 1 है, ऑटो सैम्पलर है, ओके, इन सच वे। और बाकी कैसा होता है कि नहीं तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल है कि आप आई कैन कैरी दिस इंस्ट्रूमेंट इन माय कार आल्सो, ओके, मतलब मैं इसको गाड़ी में भी लेके जा सकता हूँ, मतलब इस तरह का ये मॉडल दिख रहा है, ओके। तो अभी हम देखेंगे जो कोरिलेट करेंगे जो हमने पढ़ा था अभी, जैसे कि आप ऊपर देख पाओगे, ऊपर 4 मोबाइल फेज अवेलेबल है, ठीक है, ऊपर कोडिंग भी दिया हुआ, कलर कोडिंग की, ए इज ब्लू कलर, सी इज पिंक कलर, ओके, तो वही चीज यहाँ पे भी आप कोरिलेट कर पाओगे, इट्स एन टच स्क्रीन पैनल, ओके, यहाँ पे भी देखोगे तो सी इज पिंक कलर, डी अपना रेड कलर है, ओके, तो वही चीज यहाँ पे भी दिखाई देगी, तो कलर कोडिंग के हिसाब से आप देख पाओगे कि वो क्या चीज है, ठीक है। और जो सर ने बताया था कि 10% आईपी इन वाटर है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे रखते हैं, जो ग्रे कलर की ढक्कन का वाला बॉटल है, ओके, दैट इज फॉर सिस्टम के फ्लशिंग के लिए रखा है, प्लंजर सील के लिए रखा जाता है कि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए एवरी 3 डेज, ओके, अराउंड 200 ml जितना हम बनाएंगे और एवरी 3 डेज में हम ये चेंज करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 डिफरेंट लाइन्स आर अवेलेबल, ओके, तो इट्स अ क्वाटरनरी मोबाइल फेज सिस्टम, ओके, मतलब एक साथ में 4 मोबाइल फेज आप एक टाइम पर यूज कर सकते हो, इसीलिए। उसके बाद में अभी कैसा कि ये अपना मोबाइल फेज आ गया, आफ्टर दैट ओके, पंप जाना है तो ठीक है, तो सबसे पहले आंसर सेटअप देखेंगे हम, ये सारी लाइंस जा रही है, ओके, फिर लाइंस जाएंगी अपने पंप के अंदर, ओके, पंप से पहले जैसे कि थियरी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि डी गैसर ये आता है, ओके, ठीक है, तो यहाँ सारे यहाँ पे पहले डी गैसर के पास जाएगा, उसके बाद में जाएगा पंप में, ओके, उसके बाद मिक्सचर में जाने के बाद वो जाएगा अपना ऑटो सैम्पलर में, यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमने यहाँ पे सैंपल्स रखे हुए, ठीक है, तो जो हमारे सैंपल्स है हम यहाँ पे रखते हैं, जो आप सैंपल बनाया था, हमने इंजेक्शन किया था कैफीन का, ठीक है, तो ये इस तरह की वायल्स होती है, तो वायल के अंदर हम सैंपल रखते हैं, ठीक है, और ऊपर लेबल भी लिखते हैं कि मतलब वो चीज में है क्या। इसके अंदर हम माइक्रोलीटर जितना सैंपल ही रखते हैं, ओके, मतलब ये अराउंड 2 ml का वायल है, ओके, और अराउंड 1.5 जितना ml उतना है, उतना हम हमारा सैंपल है वी विल फिल इट। After that, it's as you can see here, okay, it's a tray of 54 sample, okay, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एक में यहाँ तक 9 तक जाएगा मैक्सिमम, ओके, लेटर ऑन एज यू कैन सी 54 का एक ट्रे है, तो ऐसी टोटल 4 ट्रे है, मतलब एक साथ में आप 1.5 ml की 216 सैंपल रख सकते हो आप, ओके। इतने सारे सैंपल की रिक्वायरमेंट कब होती है, ओके, आप जैसे देख पाओगे कि इतने सारे सैंपल हमें जब हमारे डिसोल्यूशन चल रहा होता है, डिसोल्यूशन में कैसा हमारा टाइम पॉइंट होता है, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पॉइंट पे हमें सैंपल इंजेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आप ये इतने सारे सैंपल्स के आपका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, ओके, आप सब बी फार्म से हो या एम फार्म से हो, ये कैसा है? हेलो, आर यू ऑल फ्रॉम बी फार्म? ओके, बी फार्म, ठीक है, तो बी फार्म से हो तो फिर ओके, तो डिसोल्यूशन हम जब करते हैं तो डिसोल्यूशन में हम डिफरेंट टाइम पॉइंट्स का सैंपल लोगे, तो सारे सैंपल हम यहाँ पे रखते हैं, ओके, तो अब वी विल इंजेक्ट दैट सैंपल, ओके। और जैसे हमने देखा सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन किया जाता है कि कौन से नंबर का सैंपल अपने काम पे रखा था, फॉर एग्जांपल मैं 6 नंबर पे सैंपल रख रहा हूँ, 6 नंबर पे सैंपल है, दैट इज हैविंग टाइम पॉइंट 0 मिनट्स का सैंपल है वो, फिर 7 नंबर पे 30 मिनट्स का सैंपल है, ओके, फिर 8 पे मैं रखता हूँ 1 आवर का सैंपल, ओके, तो इस तरह के आप सैंपल यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और जब भी आप ट्रे ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे ब्लिंकिंग होगा, ओके, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ट्रे अभी आपने प्रॉपर रखा नहीं रखा, अगर मैंने रखा नहीं प्रॉपर तो इट विल नॉट ब्लिंक, ओके, अगर इस तरह रखा तो ब्लिंक नहीं हुआ, ओके, तो हार्डवेयर से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने प्रॉपर ट्रे रखा है या नहीं रखा है, ओके। आफ्टर टेकिंग द सैंपल फ्रॉम द ऑटो सैंपलर, इट विल गो टू
योर कॉलम ओवन। ओके, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि कॉलम ओवन है, ठीक है, तो कॉलम ओवन के अंदर हम कॉलम रखते हैं। जैसे कि वेबिनार में मेंशन किया गया था कि हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज द कॉलम। ओके, तो ये रहा हमारा कॉलम लगा है, और कॉलम का भी डायरेक्शन फिक्स होता है, कौन सा डायरेक्शन में हमें लगाना होता है। ओके, जैसे कि आप ये कॉलम देख पाओगे, यहाँ पे ऊपर बता रहे हैं, नीचे से जो फ्लो का डायरेक्शन आप देख पाओगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे से ऊपर की साइड पर डायरेक्शन जा रहा है, तो इस तरह से हमें फ्लो सेट करना है, मतलब नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में कॉलम को रखना है, और जो बाकी एंड्स ओपन है वहां पे हम दूसरे कॉलम भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में मेथड स्काउटिंग करना है, अगर आपको डेवलपमेंट करना है, एम फार्म में जाओगे आप, तो एम फार्म में आपको डेवलपमेंट करना होगा थीसिस के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको अलग अलग ट्रायल्स लेने होंगे। अगर कोई मतलब क्यूए में जाएगा तो, या सोटिक्स में अगर करना है आपको उस तरह से, तो ऑप्शन इज अवेलेबल कि आप यहाँ पे अलग अलग कॉलम लगा दीजिए, अलग अलग कॉलम ऑफ 6 कॉलम ऑफ 10 सेंटीमीटर or 3 columns of 25 to 30 centimeter. This column, what attach you are seeing here, its dimension is 250 micron. Okay, 250, 4.6, 5 micron, 250 centimeter, 4.6 and 5 micron उसका पोर साइज है, ठीक है। और फिर वो जाएगा अपना डिटेक्टर के अंदर। डिटेक्टर के बाद यहाँ पे यूवी डिटेक्टर है। ओके, यहाँ पे फ्लो सेल में जाएगा पहले। यहाँ पे जो अपने को स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा देता था कि कहाँ पर आपका पीक आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाओगे, यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख पाओगे कि आपका पीक कहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद में वो चीज जाएगा अपना वेस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इट्स एन होल, मतलब इस तरह का वर्कफ्लो होता है। सबसे पहले आपका मोबाइल फेज जाएगा, मोबाइल फेज सबसे जाने के बाद वो डीगैसर यूनिट में जाएगा, डीगैसिंग के बाद में वो जाएगा अपना मिक्सचर के अंदर, फिर पंप के अंदर, पंप में जाने के बाद ऑटो सैम्पलर के अंदर जाएगा, जहाँ पे आपके सैंपल्स रखे हुए हैं। सैंपल यहाँ पे इंजेक्शन ले लेगा, उसके बाद में वो जाएगा अपना कॉलम के अंदर जाएगा। ओके, कॉलम ओवन के अंदर कैसा होता है कि यहाँ पे फैन रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे तो क्या फैन की वजह से पूरा ये टेम्परेचर कंपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है। ओके, उसको फोर्स एज सर्कुलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। वो मैकेनिज्म से यहाँ पे वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। आफ्टर दैट इट विल गो फ्रॉम कॉलम टू योर फ्लो सेल। फ्लो सेल, आफ्टर फ्लो सेल में जाके अपना कुछ डिटेक्ट होगा, जो आपका सैंपल जो कौन सा आपने इंजेक्ट किया है वो, उसके बाद में वो जाएगा डिटेक्टर के अंदर, डिटेक्टर के बाद में वो चीज जाएगा वेस्ट के अंदर, ठीक है। अब पुराना सिस्टम कैसा होता है कि मैनुअल के अंदर आपको इंजेक्शन करना पड़ता है मैनुअली, इसके अंदर इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे आके सैंपल रख देना है। एंड यू टू मेंशन इन सॉफ्टवेयर कि आपको कहाँ पर इंजेक्ट करना है, कौन से नंबर का वायल इंजेक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। क्योंकि मैनुअल में ये भी प्रॉब्लम होता था कि मैं जो इंजेक्शन कर रहा हूँ वो प्रॉपर इंजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, वो भी चांसेस होते हैं कि प्रॉपर इंजेक्शन होता है, किसी से नहीं होता है। ऑटो सैम्पलर में आपको सिर्फ क्या करना है कि जो आपका सैंपल बना है उसको यहाँ पे वायल में प्रॉपरली फिट करके रख देना है, और आपको सॉफ्टवेयर में जाके मेंशन कर देना है कि कहाँ पर से हमें इंजेक्ट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट इट विल टेक इंजेक्शन, आफ्टर इंजेक्शन इट विल गो टू डिटेक्टर, डिटेक्टर आफ्टर दैट इट विल गो टू द वेस्ट। और पुराना सिस्टम में कैसा था कि दिस नॉब, जो पंप का नॉब देख रहा, इसको ओपन करना पड़ता है ओके पर्जिंग के लिए, लेकिन इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है ये सिस्टम के अंदर। जब भी आपको आपका सैंपल एनालिसिस अगर ज्यादा होता है तो महीने में 1 या 2 बार आपको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो ये पंप का जो नॉब है ये आपको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट ओपनिंग नॉब ऑल्सो इट विल वर्क। ओके, नहीं तो पुराने सिस्टम में कैसा था कि आपको ये नॉब ओपन करना था पर्जिंग के लिए, अदरवाइज इट विल गिव एरर, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन भी दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पुराने सिस्टम में कैसा होता कि आपको मैनुअली पर्च करना पड़ता था, ओके आके सब कुछ करना पड़ता, लेकिन इसके अंदर कैसा कि जैसे कि मुझे सुबह 9 बजे आना है, तो इसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है कि आपको सिस्टम, जैसे कि हम मोबाइल में रखते कि मुझे सुबह उठना है 8 बजे, तो मैं 7:30 मतलब वेकअप टाइम रखता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कितने बजे वेकअप करना है सिस्टम को। ओके, जैसे कि आप सुबह उठते हो, आपको आना है सुबह 9 बजे, तो इसके अंदर ऑप्शन दिया जाएगा कि 8 बजे अपने सिस्टम वेकअप हो जाएगा। अपने आप वेकअप होने के बाद जो भी अपने मोबाइल फेस बना है वो ऑटोमेटिकली पर्जिंग कर लेगा। ओके, आफ्टर पर्जिंग ओके इस बाद में जो आपका कॉलम है वो सैचुरेट भी हो जाएगा। अगर आपने सैंपल बनाए, सैंपल भी लग जाएंगे ओके ऑटोमेटिकली। और क्राइटेरिया में अगर आईपी बीपी या यूएसपी में जो आपने कुछ मेथड मेंशन किया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ सिस्टम सुटेबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ थ्रेड प्लेट्स के क्या क्राइटेरिया है, ओके बेस्ड अपॉन दैट इट विल चेक, और वो बोलेगा कि मतलब ओके है सिस्टम या नहीं। अगर ओके है तो आपके सैंपल एनालिसिस आगे जाएंगे, नहीं तो आगे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपका सैंपल एनालिसिस अगर प्रॉपर नहीं कंडीशंस और आगे चले जाते हैं तो एरर आ जाएगा, और उसके लिए आपको इंसिडेंस भरना पड़ता है, ओके जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि एरर क्यों आया है। ओके, तो वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वो सारी चीज ना हो उसके लिए ये ऑटोमेशन दिया जाता है कि आपका जो एरर है, आपका जो डाउन टाइम है, जो ब्रेक डाउन टाइम जो
सर ने मेंशन किया था, गुणवंत सर ने, ओके, तो वो आपका एकदम मिनिमम रहेगा इसके अंदर। ओके, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर संडे को मुझे काम करना है, ओके, तो पहले मैंने मेथड नंबर 1 बनाया, ओके, उसके अंदर आइसोकेटिक मोबाइल फेज है, ओके, उसके अंदर आइसोकेटिक का सैंपल भी रखे हुए। जो सेकंड मेथड है दैट इज ग्रेडियंट मोबाइल फेज, ओके, उसके अंदर सैंपल्स मैंने दूसरे ट्रे में रखे हुए। तो ऑटोमेटिकली कॉलम 1 से कॉलम 2 पे स्विच भी हो जाएगा, सैंपल एनालिसिस भी स्विच हो जाएंगे, ओके, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली शटडाउन भी हो जाएगा। शटडाउन के लिए मुझे बैठना नहीं है, ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल मेरा सीक्वेंस रात को 2 बजे खत्म होता है, तो 2 बजे तो मैं सीक्वेंस को शट डाउन कर लेंगे, आने वाला हूँ नहीं, ओके, तो 2 बजे अपना सीक्वेंस शट डाउन हो जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरे दिन का भी आपको पता है क्या प्लानिंग है, तो आप वो प्री डिफाइन आपको मोबाइल फेज रख सकते हो, ओके, और ऑटोमेटिकली सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सिस्टम स्टार्टअप लिखा है, ओके, ऑटोमेटिक पर्च भी हो जाएगा, और सिस्टम स्टेबिलिटी का सैंपल रखे आपने, ओके, तो सिस्टम से सैंपल भी इंजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली सब कुछ काम आपको ऑटोमेशन से हो जाएगा। और जो ये मॉडल की जो हमने बात किया था, ओके, दिस मॉडल इज शिमात्सु LC 2030C। ओके, C स्टैंड्स फॉर कूलर, मतलब जो आपको ऑटो सैम्पलर है, जो हमारे सैंपल्स है, ओके, सैंपल्स को भी मैं यहाँ पे कूलिंग दे सकता हूँ। अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पाते हो, ओके, तो यहाँ पे कैसे है कि लेफ्ट 15, राइट 15, ओके, लेकिन मुझे ऐसे कि लेफ्ट को 15 डिग्रीज देना, राइट को टेम्परेचर नहीं देना, देन दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल कि लेफ्ट रहेगा 15 डिग्रीज पर, जो राइट सैंपल है उसको टेम्परेचर देना नहीं है, तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर पर रहेंगे। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। अभी कैसे था, लॉक मोड है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे लॉक ओपन हो जाएगा यहाँ पे, देन आई कैन ऑपरेट। ओके, लॉक इज ओपन नाउ आई कैन ऑपरेट हियर। ओके, ओके, तो हम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट है या आइसोक्रेटिक है। इफ इट्स आइसोक्रेटिक तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कौन सा लाइन आपको यूज करना है, ए लाइन यूज करना है, बी लाइन यूज करना है, सी लाइन यूज करना है, कौन सा लाइन यूज करना है। इट इज ग्रेडियंट देन यू नीड टू स्पेसिफाई कि कौन सा लाइन में से कितना मोबाइल से जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है, ओके, डी लाइन यहाँ पे रखी है मैंने, और एक रखी सी, ए और बी, सारी लाइन एक लाइन में ही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कंपोजिशन मेंशन करना है, मोबाइल कंपोजिशन कितना है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक इज 75, ओके, और ये अपना 25 है सी, और आपका फ्लो रेट आपको मेंशन करना है, आपका कॉलम में मतलब जिस कंपाउंड होगा कितने टाइम पे रिटर्न होकर आने वाला है। ठीक है, जनरली अपना जो कंपाउंड होगा रिटर्न 1 मिनट के आसपास हो जाता है। ओके, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो बियॉन्ड 1.5, ओके, बट सम ऑफ द मेथड जो आपका IP BP या USP मेंशन किया होगा उसमें ज्यादा फ्लो रेट दिया होगा, देन यू कैन गो, ओके, लेकिन उसमें कॉलम का जो लाइफ होता है वो कम हो जाएगा उसके अंदर। आइडियल इट इज एडवाइजेबल अगर आप डेवलपमेंट करते हो एमफार्म में, तो 1 ml के आसपास फ्लो रेट रखो, दैट इज एडवाइजेबल। ओके, आफ्टर दैट अगर जो हमने बात किया कि लेफ्ट रैक और राइट रैक को मुझे टेम्परेचर को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से टेम्परेचर दे दूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्रीज करना है मुझे। ओके, तो दोनों पे 10 डिग्रीज अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 किया तो यहाँ पे वेट कूलर का ऑप्शन आ गया कि अभी कूलर का टेम्परेचर ये 10 डिग्रीज है, एक्चुअल टेम्परेचर इज 15 डिग्रीज। ओके, तो ये भी यहाँ पे 10 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद में आ गया कॉलम ऑन टेम्परेचर। कॉलम ऑन टेम्परेचर यू कैन गिव अप टू 90 डिग्रीज ऑल्सो। ओके, जो प्रीवियस मॉडल था उसमें 85 डिग्रीज तक कर सकते थे, इसके अंदर आप 90 डिग्रीज तक भी कॉलम ऑन टेम्परेचर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन सा नंबर कॉलम स्विच करना है। ओके, ये आपको 1 नंबर का स्विच करना है, 2 नंबर का, ऐसे 6 तक ऑप्शन इज अवेलेबल। ओके, यू कैन स्विच अप टू 1 to 6, आपका जहाँ पे आपने जो कॉलम रखा है आप पे स्विच कर सकते हो। फिर आपका यूवी है तो यहाँ पे यूवी डिटेक्टर, इसलिए यहाँ पे यूवी डिटेक्टर मेंशन किया होगा। अगर आपको यूवी के अंदर 2 वेवलेंथ पर काम करना है तो वो ऑप्शन भी दिया जाएगा आपको कि आपको दूसरा कौन सा वेवलेंथ है। ओके, सॉफ्टवेयर से वी कैन डू दैट कि अगर आपको 2 वेवलेंथ पर एक साथ में काम करना है, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर यूवी। ओके, अगर आप पीडीए लेते हैं तो पीडीए कैसा होता है कि पीडीए का रेंज हमें पता है कि 200 से लेके 800 नैनोमीटर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दिया जाता है कि फ्रॉम 190 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक आप फुल स्कैन कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट बेस्ड अपॉन जो आपका एरिया आया है कि आपको कौन से वेवलेंथ पर आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दिया जाता है कि आपको अगर पता नहीं है कि उसका लैम्बडा मैक्स कहाँ है, तो ऑप्शन दिया जाएगा अंदर कि आप लैम्बडा मैक्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे पता नहीं है, तो लैम्बडा मैक्स, प्रोबेबल लैम्बडा मैक्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबल लैम्बडा मैक्स। ओके, तो 4 या 5 प्रोबेबल लैम्बडा मैक्स आपको मिल जाएंगे। ओके, आप वहाँ पे उसको एक बार रन होने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा लैम्बडा मैक्स के अंदर मेरा जो एरिया है वो कंसिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपको फिर से सैंपल इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो पीडीए का एडवांटेज है, और पीडीए जनरली यूज फॉर पिक प्योरिटी। अगर आपने
जो कंपाउंड लगाया है उसके अंदर इम्प्योरिटी अवेलेबल है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी दिया जाता है। और ये डिटेक्टर है, जब लाइट चल रहा होगा तो यहाँ पे D2 के ऊपर इस तरह से ब्लिंक होगा। अगर आपको यही स्क्रीन के अंदर चेक करना है, अगर कुछ रन चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो स्क्रीन के अंदर। एंड यू कैन सी हियर मॉनिटर फॉर द क्रोमेटोग्राम, जो हमने मैं पीछे जाके स्क्रीन पे देखो, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये स्क्रीन के अंदर यहाँ पे टच स्क्रीन पैनल है, आप यहाँ पे सीक्वेंस भी देख सकते हो अगर आपने एक बार लग गया उसके बाद। अभी फिलहाल मेथड का पैरामीटर है, तो हमने देखा कि एक मेथड के अंदर क्या क्या चीज होता है कि हमें चेक करना है, आइसोकेटिक मोड है, ग्रेडिएंट मोड है। ठीक है, आपका मोबाइल पे कांस्टेंट मेंशन कर लीजिए, फ्लो रेट मेंशन कीजिए। ओके, कॉलम ऑन टेम्परेचर हियर, ओके दिस फॉर सैंपल टेम्परेचर, आपको सैंपल का टेम्परेचर कितना मेंशन करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर कितने वेवलेंथ पर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप यूवी है इसलिए हमें फिक्स वेवलेंथ पर ही काम करना होता है। अगर पीडी होता है तो आप अननोन वेवलेंथ पर भी काम कर सकते हो, बट दैट हैज टू बी आपका क्रोमोफोरिक कंपाउंड होना चाहिए। तो आप अननोन वेवलेंथ भी यहाँ पे स्कैन करके चेक कर सकते हो, तो दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल देयर। ओके, और एक और जैसे कि ये एज यू कैन सी इट्स अ प्लस मॉडल, तो प्लस के अंदर थोड़े एडवांस फीचर अवेलेबल है। तो उसमें होता क्या है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वायल है, स्टॉक का वायल, जिस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस की जो स्टॉक का वायल है वो मैंने रखा है 51 पे, और ये मेरा डाइल्यूएंट का वायल है, और एक एम्प्टी वायल है, खाली वायल रखता हूँ मैं जिसके अंदर कुछ मेरा सैंपल नहीं है। ओके, ये मेरा खाली वायल है, तो क्या करेगा, मुझे सॉफ्टवेयर में आके बस इतना मेंशन करना है कि स्टॉक के वायल में से डाइल्यूएंट डाइल्यूशन करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ 1000 ppm। ओके, तो 1000 ppm में से मुझे यहाँ प्रिपेयर करना है 500 ppm, तो मुझे इतना मेंशन करना है सॉफ्टवेयर के अंदर कि 1000 ppm में से कितना आपको वॉल्यूम प्रिपेयर करना है एम्प्टी वायल के अंदर। ओके, तो एम्प्टी वायल के अंदर मुझे लिखना होगा फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूँ 200 माइक्रोलीटर, तो क्या करेगा 100 माइक्रोलीटर फ्रॉम स्टॉक इट विल टेक एंड 100 माइक्रोलीटर फ्रॉम डाइल्यूएंट इट विल टेक, एंड इट इन सच अ वे इट विल प्रिपेयर 200 माइक्रोलीटर, आपका फाइनल वॉल्यूम बन गया 200 माइक्रोलीटर, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 50% हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ऑफ 1000 ppm। 1000 का मतलब उसने सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ आपका 500 ppm का सैंपल बन जाएगा और इंजेक्ट भी कर देगा। सो इन सच अ वे इट कैन डू सीरियल डायलेशन आल्सो। ओके, तो उसको हम ऑटो डायलेशन फीचर बोलते हैं। फिर आप एक और एक्सपेरिमेंट आता है आरएस करके, रिलेटेड सब्सटेंस करके, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा एपीआई होता है, ओके, जो मेन कंटेंट होता है दवाई का, ओके, दैट वी आर गोइंग टू इंजेक्ट इट विद इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटीज क्या होता है, बहुत महंगी आती है। ठीक है, तो वी कैन डू दैट इन सच अ वे लाइक ये हमारा एपीआई है, दिस इम्प्योरिटी 1 एंड दिस इम्प्योरिटी 2, और ये सारी इम्प्योरिटी मुझे प्रिपेयर करनी है इस एम्प्टी वायल के अंदर। ठीक है, ये खाली वायल के अंदर, तो मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको इम्प्योरिटी कितनी स्पाइक करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे 1 ml के अंदर 2% इम्प्योरिटी स्पाइक करनी है एपीआई के अंदर। ओके, तो दिस वन इज द एपीआई, ये रहेगा 960 माइक्रोलीटर, और 1 ml का 2% रहेगा 20 माइक्रोलीटर। ओके, तो 960 माइक्रोलीटर विल बी एपीआई, 20 माइक्रोलीटर इम्प्योरिटी 1, 20 माइक्रोलीटर इम्प्योरिटी 2। ओके, ये सब कुछ प्रिपेयर करेगा 1 ml के अंदर एम्प्टी वायल के अंदर, इट विल इंजेक्ट दिस सैंपल आल्सो। ओके, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सैंपल में प्रिपेयर करके इंजेक्ट भी कर देगा, तो दैट फीचर इज नोन एज स्पाइकिंग और रिएजेंट। ठीक है, अगर किसी को अमाइनो एसिड करना होता है तो अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक डिटेक्टर्स आते हैं। ओके, स्पेसिफिक टाइप का आपको ऑटो सैंपलर रैक भी चाहिए होता है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते अमाइनो एसिड। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, अमाइनो एसिड का वायल होता है हमारे जो किट, यू नीड टू परचेज दैट थिंग। ओके, किट के सैंपल्स आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड रख देने। ओके, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दिया कि आपको कौन से अमाइनो एसिड कितने प्रिपेयर मतलब लेना है, कितना माइक्रोलीटर। ओके, तो वो सब कुछ निडल के अंदर ही यहाँ से अमाइनो एसिड 1 2 मतलब सक करेगा निडल के अंदर, और वहीं पे निडल के अंदर प्रिपेयर करके इंजेक्ट भी कर देगा। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस आते हैं, ये एडवांस ऑप्शंस है। these are options available with the plus feature of the I series। ओके, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये प्लस मॉडल है। ठीक है, अभी जो ओके इफ यू गो विद अस, ओके, तो इसका भी अपडेटेड मॉडल है 2050। ओके, तो उसके अंदर भी और एडवांस फीचर है कि उसके अंदर कैसा होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे मोबाइल फेस ऊपर रखते हो, तो यहाँ पे ट्रे के ऊपर सेंसर्स रखे हुए हैं। ओके, लाइक सच काइंड ऑफ सेंसर। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रे है मोबाइल फेस का, और यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक सेंसर्स है, दिस इज ग्रेविमेट्रिक सेंसर्स। ओके, तब यहाँ पे जो भी मोबाइल फेस यहाँ पे रखते हैं ऊपर, तो बता देगा कि कितना ml आपने मोबाइल फेस यहाँ पे रखा हुआ है, कि ए लाइन के अंदर कितना मोबाइल फेस है, बी लाइन के अंदर कितना मोबाइल फेस रखा हुआ है। ठीक है, और बिफोर आप बैच सबमिट करोगे आपके जो भी मेथड के हिसाब से वो ये भी बता देगा कि ए लाइन में से कितना मोबाइल फेस जाएगा, बी लाइन में से कितना मोबाइल फेस जाएगा।
ओके इसलिए आपको पता चलेगा कि ओके ए लाइन में कितना मुझे मोबाइल फेज रखना है, बी लाइन में कितना मोबाइल फेज रखना है। ओके तो ऑटोमेटिकली मोबाइल फेज कैलकुलेट हो जाएगा और वो भी बताएगा कि कितना एमएल आपको मोबाइल फेज जाने वाला है। ओके तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है यूजर के हिसाब से यूजर की कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो उसमें होता है ऐसा कि बैच सबमिट तो हो जाता है लेकिन फिर एयर बबल चले जाता है पूरा लाइंस के अंदर, क्योंकि मोबाइल फेज मेरा खत्म हो गया। ठीक है तो वो एरर ना आए आपके, तो इसलिए वो फीचर दिया गया है कि आप मोबाइल फेज के ऊपर ट्रे रख दीजिए, ट्रे के ऊपर आपको सिर्फ मोबाइल फेज रख देना है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बेस्ड अपॉन योर मेथड इट विल शो कि हाउ मच मोबाइल फेज इज गोइंग टू कंज्यूम बाय लाइन ए और लाइन बी। ओके या आपका अगर एक ही लाइन है तो एक लाइन से कितना मोबाइल फेज जाएगा वो भी कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है जो एरर है तो एरर दैट कैन बी मिनिमाइज इन सच अ वे। ओके जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 10 डिग्री यहाँ मेंशन किया था, तो अराउंड 9.8 और एक में 10.6। ओके अभी 10 डिग्री यहाँ पे अचीव हो जाएगा। इसका फुल रेंज होता है 4 डिग्री से लेकर आप 45 डिग्री तक आप यहाँ पे ऑटो सैम्पलर के जो आपके सैंपल्स है उसको टेम्परेचर दे सकते हो। ठीक है और इसमें एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर जैसे कि मेरे पास अभी यूवी डिटेक्टर है, ओके ये वाला यूवी है, लेकिन मुझे इसके अंदर पीडीए भी यूज करना है। ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये पीडीए अलग डिटेक्टर है तो मुझे सिर्फ अलग डिटेक्टर ही परचेस करना है और वो अलग डिटेक्टर के साथ में मैं ये इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके यूज भी कर सकता हूँ। मुझे पूरा नया सिस्टम परचेस करने की जरूरत नहीं, एक्सिस्टिंग सिस्टम कैन सफाइस माय पर्पस कि मुझे उसको अपग्रेड ही करना है, सिर्फ डिटेक्टर ही मुझे परचेस करना है, बाकी ये सिस्टम के अंदर मेरा काम हो जाएगा। ठीक है और कोई क्वेरी है तो बोलिए फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट्स। हेलो Okay, sir. So that is from our side. We completed from our side. अगर आपको कोई question वगैरह है, then we can address the question. Otherwise, we can close this session. Ashok sir. Yes, Gunvant sir. I think student almost clear very good about HPLC working part, HPLC basic component, as well as when he or she develop the method. Okay, some point related to troubleshoot, and when chromatogram develop, then how to interpret. Okay, so almost today I think get clear about basic step for the HPLC method development. And from my side, is very good session. Student is 100% get to get, except from theory. See, when HPLC, when they go in industry, after B Farm, after M Farm, okay, they have to work out. So during this session, almost student getting on basic idea. Now in interview, they ask question like what is HPLC, what is column, what is pump, what is isocratic gradient system, or what is chromatogram. Okay, so I think almost student now clearly give idea answer. So anything question from participant? Any question? Okay, so Gunvant sir, again, thank you very much for spending your valuable time for today's this session. And almost because when our college has cyber lab and your instrument is Simarju, so student comparing these two instruments, surely they are work out when on this, getting that what are the difference between these two software. So within a week or within a 15 days, they're friendly with these types of system. So thank you again from Vidyabharti Trust as well as our principal sir. Okay, and thank you again for your team member who are spending such a valuable time and so on your lab to our student. Okay, so thank you again, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay, sir. Okay, so we are concluding the session, right? Yes, sir. We will share the this recorded sessions with you, sir. Okay. I'll mail you maybe by WeTransfer or something. I'll mail you, sir. Okay, no problem. Sir. No problem. Okay, thank you. Okay. Thank you very much for your time, sir, and thanks for giving us the opportunity. Yes, yes. Yeah, dual. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. All participants now can leave. Yeah.